सर लाइव हम यूट्यूब पर। मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर? हाँ जी विवेक जी, हाँ जी हाँ जी मैंने यूट्यूब पे हम लाइव हैं। हाँ हो गए। नमस्कार विवेक जी, नमस्कार दोस्तों। नमस्ते ऋषि जी। प्रेसिडेंट ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स के इस प्लेटफॉर्म पर, इस वेबिनार सीरीज में, जिसमें हम लोग कोर्स कर रहे हैं 7 डेज रिफ्रेशर कोर्स ऑन जीएसटी। तो आज हमारे साथ हमारे आज के स्पीकर हमारे इंडायरेक्ट टैक्स कम्युनिटी के चेयरमैन हिमांशु मोहता जी मौजूद है। नमस्कार हिमांशु भाई। और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मुकेश सिंह जी, जिनका ये सपना था कि हम लोग ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे स्पीकर्स को मोटिवेट करेंगे कि वे आएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं और लोगों को दें। तो आज मैं देख पा रहा हूँ उनका वो सपना सच होता हुआ, जिसमें सभी स्पीकर्स हमारे इन हाउस हैं। और हम सभी को प्रेरणा मिली हमारे वाइस प्रेसिडेंट सचिन सिन्हा जी से, जो हमारे बड़े मेंटोर हैं, एडवाइजर हैं, जिन्होंने कोर्स डिजाइन करने में बड़ी हेल्प करी। थैंक यू सचिन भैया। थैंक यू सर। So welcome, I welcome to Mukesh Singh ji, founder president, and Sachin Sinha bhaiya, our vice president, our senior, our mentor. So over to you, Sachin bhaiya, go further. Thank you, Risuji. Welcome, friends. Now today is the fourth day of our 7-day indirect tax course that is we are doing on the GST. And this time, very unique thing is that we have chosen only in-house speaker who belongs to GCP. And today we have our very own Himanshu Mohta ji, who will discuss ICD and cross charge. I feel that these topics are very litigative, and Himanshu ji is the right person who can guide us how to deal with these type of situations. And to moderate today's session, we have Gaurav Agarwal ji, very young and dynamic chartered accountant, who will moderate the session. Friends, these type of program cannot be planned without a program coordinator and a program in charge. And for this purpose, we have Sudhir Singh ji and Vivek Sharma ji, who have guided all of us how to proceed in part of technical followings, and guidance of Sudhir ji is very important for us. So without wasting much time, I'd like to hand over mic to Gaurav Agarwal ji for the further proceeding of this session. Thank you. Thank you, Sachin ji. I thanks GCP for the opportunity. I welcome Himanshu ji, today's speaker for the session. Himanshu ji is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India and also founder member of GCP. He is also active member of GCP executive group. और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से उनको मुकेश जी ऑलवेज कहते हैं यारों के यार, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और सर आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो ना सिर्फ टेक्निकली बल्कि प्रैक्टिकली भी बड़ा रिलेवेंट है, और वो टॉपिक ही अपने आप में यूनिक है। इसलिए आई वेलकम हिमांशु जी टू एनलाइटन अस ऑन टुडेज टॉपिक आईसीडी, आईएसजी, क्रॉस चार्ज एंड ई-वेबल। ओवर टू यू हिमांशु जी। Thank you, Gaurav bhai. Thank you very much for my introduction. Thank you, Rishu ji, our current president and founder president Mukesh bhai, for giving me an opportunity to deliver my discussion of topic today. Today's discussion, which is ISD, e-way and cross charge. Thank you, Sachin Sinha sir. आप ऑलरेडी हमारे लिए एक मेंटर है, और आप मेंटर हैं एक्चुअली जीसीपी के लिए. And Gaurav bhai, for your information, actually I was the first member of GCP, and my membership number in GCP is 001. So without losing our time, let's start the topic of today, which is e-way bill. So e-way bill के topic को मैं start करना चाह रहा हूँ पहले. So gradually we'll go to rest of the topics as well. So I hope my screen is visible to all. No sir, नहीं हो पाया अभी. Yeah. I guess it's fine now. Yes. Yes, Yeah. it is visible now. So basically today's topic is e-way bill. So इस topic के लिए मैंने आज allot किया है मोटा मोटा 45 minutes for this topic. What we are going to cover in this entire topic would be
पूरी प्रेजेंटेशन हम लोग किस बेस से करने वाले हैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. व्हाट इज ई-वे बिल, ई-वे बिल रूल्स, जनरेशन एंड प्रोसेस एक्सप्लेन्ड. टॉपिक विल टेक अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स. सो इस पूरे टॉपिक में जो जो चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज ई-वे बिल, when to generate, who should generate, case when e-way bill is not required at all, status of implementation across India, how to generate e-way bill, validity of e-way bill, documents required to generate an e-way bill, and FAQs. गौरव जी, हम ट्राई करेंगे इस चीज को बड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाए रखें ताकि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और अपना नॉलेज कंटिन्यू बेसिस में, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर शेयर भी चलता रहे प्लस क्रॉस चेक भी चलता रहे, राइट? So let's come to the latest update. Before starting this topic, I really want to say there are few latest amendment which comes in GST in respect to e-way bill, and I think ये सबको पता होना चाहिए कि कुछ अभी अपनी फेटर्निटी मेंबर्स थे जिसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन डाउट्स थे कि हाँ, ई-वे बिल जो 24 मार्च से पहले कटे हैं, मींस बिफोर लॉकडाउन, वैलिडिटी क्या रहेगी, और जो इनवॉइस कटा ही नहीं उसकी वैलिडिटी क्या होगी. मैंने इतने केसेस देखे हैं अपने खुद के क्लाइंट्स के केस में, उन्होंने अपने इनवॉइसेस बना दिए थे बिफोर लॉकडाउन. व्हाट हैपेंस इज व्हेन लॉकडाउन ओपन 17 मार्च एंड उसके 30 जून तक, मतलब उन्होंने ई-वे बिल बनाया उसके बाद में उसी इनवॉइस के ऊपर, बट दैट इज नॉट वैलिड एज पर लॉ, राइट? सो लेटेस्ट अपडेट on the 9th of June 2020 is as on 9th of June 2020, e-way bill generated on or before 4th of March 2020, means लॉकडाउन से पहले जितने भी e-way bill बने थे सिर्फ उन्हीं e-way bill का एक्सटेंशन हुआ था फॉर on the question of validity, means कि validity जो एक्सपायर होने वाला था क्वेश्चन, that was extended to आफ्टर 20th मार्च टू 24th मार्च के बीच में जितने भी इनवॉइस हुए उनकी वैलिडिटी इन्होंने एक्सटेंड करके बोल दी कि 30 जून तक दीज इनवॉइस और दीज ई-वे बिल विल बी वैलिडेटेड. और लेट्स से आपने उस टाइम ई-वे बिल जनरेट ही नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन हुआ. लॉकडाउन होते ही आपके सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद, भारत बंद. तो भारत बंद मींस उसके अंदर सब चीज बंद हो गई थी इनिशियली. जो नेसेसिटी सप्लाईज भी थी वो भी लेटर ऑन दे स्टार्टेड, दैट वाज नॉट स्टार्टेड ऑन अ टाइम इटसेल्फ, राइट? सो ई-वे बिल जो रेज हो गए तो गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई, आपके गोडाउन से अगले दिन मूवमेंट होनी थी. अकाउंटेंट ने लेट्स सपोज 20th मार्च को एक इनवॉइस बना के गया और ई-वे बिल बना के चला गया कि इसकी मॉर्निंग में पिकअप होना है, और बट वो पिकअप उस दिन नहीं हो पाया. 23 तारीख या 24 तारीख तक पिकअप नहीं हो पाया. उनकी डेट इन्होंने, उनकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंडेड कर दिया गया था टू 30th जून. देन देयर वाज एन अपडेट ऑन 5th of May. बेसिकली द ई-वे बिल, बिकॉज इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ था. आपको याद होगा जिस तरीके से हमारी ई-वे बिल लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ था उसी तरीके से ई-वे बिल की वैलिडिटी भी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते गए. फ्रॉम 15, पहले इन्होंने 15 अप्रैल तक रखा, देन 15 अप्रैल के बाद इन्होंने 30 जून तक वैलिड किया, एंड फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आई थी वो सिर्फ 15 अप्रैल तक आई थी बिकॉज लगा था कि हम लोग उस टाइम तक एक नॉर्मल ट्रांसफर अपना शुरू करवा पाएंगे. So let's come to integration. This is one of the very great step and very tight step from the government. Basically वाहन ई-वे बिल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया आपका जितना भी जो भी व्हीकल नंबर आप अपना ई-वे बिल जनरेट करते टाइम में पोर्टल पे डालते हैं, आपका वहां पे ही वैलिडेशन मार्क आ जाएगा. इफ दैट नंबर इज फेक, बेसिकली इसका मोटो क्या है, आप इसका मोटो समझिए. गवर्नमेंट का मोटो इसमें बड़ा क्लियर था, यदि दे वांट टू प्लग इन इनवैलिड व्हीकल नंबर, हम किसी भी गाड़ी का नंबर डाल देते थे. ऐसा बहुत हुआ है दिल्ली के अंदर, आपने देखी होगी लास्ट कुछ टाइम में जो जीएसटी रेड्स हुई थी, तो उसके अंदर मेजरली रेड्स क्यों हुई, उसके अंदर देखा गया कि एक ई-वे बिल बना हुआ है, उस पे एक स्टील का ट्रक लोड का माल डाल दिया, एंड दैट नंबर जो उन्होंने डाला है ई-वे बिल में, that numbers belongs to a scooter or the two wheeler. मतलब आपने 10 टन माल का लोड किया हुआ ट्रक, ई-वे बिल आपने काट दिया, उसके ऊपर वो गया स्कूटर के ऊपर. हाउ इज इट पॉसिबल? सो बेसिकली, एंड टू, देयर इज वन मोर थिंग, गवर्नमेंट इज
too much pro for cashless economy. They really want कि fake bills वगैरह बंद हो. So fake bills के vehicle numbers को हटाने के लिए और second fake bills को हटाने के लिए, ताकि ई-वे बिल में बेसिकली वाहन सिस्टम से इन्होंने कर दिया है. आने वाले टाइम में बेसिकली दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका. पायलट स्केल पे लाने से पहले दैट वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका. नाउ द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी वैलिडेटेड एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. वहां पे ही चेक मार्क आ जाएगा ये दिस बिल नंबर इज करेक्ट और नॉट. सो आप यदि कभी एक्चुअली मैडम मेरी कंप्लेंट थी, तो उसके रिगार्डिंग मुझे बात आप करनी है. जो यदि इसके कभी देखेंगे ईस्ट दिल्ली के जो मैनेजर है, evahan.com is a website जहां पे आप यू जस्ट पुट इन योर व्हीकल नंबर, यू विल गेट टू नो व्हीकल लोड क्या है, उसका वैलिडिटी है नहीं है, इंजन उसका इंजन की कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है. सो दिस इज द वाहन ई-वे बिल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर इन लोगों ने सारे ई-वे बिल को इंटीग्रेट करना है और जितने भी व्हीकल नंबर है उसको भी इंटीग्रेट करना है टू curb the process of fake billings. Let's move, guys. Basically, these are the modes of e-way bill generation. In time to come, government has realized, boss, ऐसे काम नहीं चलेगा, because जीएसटी में लोगों को तकलीफ हो रही थी. हर एक नए बदलाव में तकलीफ होती है, हमारा नेचर ही ऐसा है, हम इंसान है, राइट. सो गाइस, इसी तरीके से पहले ये बिल बोला कि वेबसाइट के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा. फिर आज के टाइम में यदि हम टोटल तरीके से देखें, देयर इज एन ऐप अवेलेबल इवन for the ease of business, ease of doing business, which is the Modi ji's one of the Modi ji wanted to promote this thing in India ki ease of business mein we want to keep our system very easy. Website based hai, SMS based hai. If you just put the bill number, amount number, and in a specific format which is given by the GST department, आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा. लेट्स से देयर इज एन कुछ कंपनीज होती है जहां पे, जैसे आईटीसी की यदि मैं बात करूं, तो आईटीसी के अंदर में पूरे दिन ट्रक नहीं चलते रहते. ट्रक की मूवमेंट होती है एक टाइम के बाद में. फैक्ट्री का लेट्स से कट ऑफ टाइम है 6:30 PM फॉर द प्रोडक्शन. उसके बाद में उनकी सिर्फ लोडिंग होती है. लोडिंग मीन्स जितने बिल कटे हैं उन सबकी लोडिंग एक साथ शुरू होती है. उसमें आपने सारे बिल्स बनाए और एक साथ एक जेसन फाइल बनाई है, आप बल्क ई-वे बिल निकाल सकते हैं. एक साथ में 1000 यदि आपकी इनवॉइस है तो 1000 इनवॉइस आप एक साथ ई-वे बिल निकाल सकते हैं. देन जीएसटी सुविधा आधार, एंड्रॉइड ऐप. सो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ ई-वे बिल जनरेशन. सो ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग ऑन ई-वे बिल, ये देखिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने ई-वे बिल को, बिकॉज ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है? ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑन अ मोमेंट ऑफ गुड्स. इन मूवमेंट ऑफ गुड्स के टाइम पे ही गवर्नमेंट वांटेड टू प्लग दीज थिंग्स कि बॉस चोरी नहीं होने देनी. चोरी ना माल की और ना ही टैक्स की चोरी. तो ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल में मींस ई-वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड फॉर द टैक्स पेयर हु हैव नॉट फाइल्ड देयर रिटर्न फॉर द प्रीवियस 2 consecutive months और 2 quarter. इट मींस जो डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड एसएससीज है, इन लोगों को चिटिंग नहीं करने देंगे. इफ आपका एसएससी या कोई टैक्स पेयर ऑनेस्ट है और टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वो अपना गुड्स की मूवमेंट कर पाएगा. अब ये ऐसा क्यों किया? यदि गवर्नमेंट को टैक्सेशन का कलेक्शन कब होना है? इट्स वेरी क्लियर, ऑन द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नॉट ऑन द जनरेशन ऑफ इनवॉइस. सो ऑन द फाइलिंग ऑफ रिटर्न जब होगा, फाइल यदि मैं रिटर्न ही नहीं फाइल करूंगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू गया नहीं. और जो एसएससी डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर डिफॉल्ट कर रहे हैं टैक्स पेमेंट में, उन लोगों को इन्होंने टाइट कर दिया. बॉस, इफ यू आर नॉट पेइंग मी टैक्सेस, देयर इज नो नीड टू डू सेल्स. आप बैठो, बिजनेस क्लोज करो. इफ यू आर नॉट एबल टू मूव योर गुड्स, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोजिंग मोड पे आ जाएगा. So that is why they have put the condition in time to come. ये initially नहीं था, but yes, gradually government ने इसको tighten करता गया. This is the only tool where artificial intelligence is going to play big role in time to come. आपका कौन सा व्हीकल कहाँ पे है नहीं है. आपने देखा होगा फास्टैग आ गए सभी हाईवेज के ऊपर. वो उस व्हीकल की मूवमेंट हुई नहीं हुई, आरएफडी का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है इसके अंदर. रजिस्टर्ड व्हीकल होगा तो ही, जैसे यूपी के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. So these all things are happening only to control fake billings, ungenuine billing.
सो गवर्नमेंट का मोटो नहीं है कि काम को कम करना है, धंधे को मतलब बिजनेसमैन को प्रॉब्लम करनी है. नो, whosoever is doing good business, good practices, they will flourish. But whosoever is not doing their compliance on time, or whosoever is not, keeping their guys on toes, मतलब अपने accountants को toes पे नहीं रख रखा, वहां पे दिक्कत आने वाली है. In the same way, if the taxpayer has not filed their GST or 3B for the 2 months or the consecutive, he cannot generate e-way bill for the dispatches, neither he can't receive. So result is what? He has to stand still. Only when a taxpayer files GST. अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है सर यदि ब्लॉक हो गया तो क्या? कुछ नहीं, just file your 2 consecutive months return, that's it, done. If you file your return, then there would be no blockage. Let's say आज मेरा GST नंबर ब्लॉक्ड है, मैंने गौरव जी से रिक्वेस्ट करी, गौरव जी मेरे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप प्लीज मेरी रिटर्न फाइल कर दीजिए. उन्होंने मेरे दोनों कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की, दोनों कंसेक्यूटिव मंथ्स की रिटर्न उन्होंने मेरी फाइल कर दी. क्वार्टर एंड मंथ डिपेंड ऑन द टर्नओवर क्राइटेरिया, उसमें हम नहीं जाएंगे. सो जैसे ही उन्होंने फाइल किया, द सेम विल बी ओपन फॉर अस. सो इट्स एन अगेन यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम करती है, कोई आदमी नहीं बैठा. यू डोंट हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्टर साहब से बोले सर प्लीज ये देखो, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग. Just file your return, it will be unblocked immediately on next day. So the system of the e-way bill blocking was implemented of 2nd of December. It is very, very new. 2nd of December 2019, the time government realized now now the GST implementation is smooth, functioning is smooth. Let's do some more changes. In the same way, they have made some changes. So basically all states required to use e-way bill for the intra-state movement of. Yes, every state has a right कि उनको लिमिट्स क्या रखनी है. जैसे दिल्ली के अंदर बात करें तो there is a limit of 1 lakh rupees, right? In the same way, every state has a different limits. E-way bill operation are compulsory for the intra-state movement of the goods, all states except Delhi, with effect from 3rd June 2018. But yes, e-way bill required for intra-state movement of the goods, Delhi began at on 16th of June 2018. So basically, these are the dates. 25th May, 18 ko Andaman Nicobar, Chandigarh, they have started it. Then rollout of the e-way bill basically 25th April. Then Meghalaya, Sikkim, Andhra Pradesh. These are the states who started their e-way bill system in their respective states. So this is just a demo. ये मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? Because it will give you a rough idea कि e-way bill दिखता कैसा. देखिए मेरे को सबको I know everybody is professional here, everybody knows it. But आप यदि ऊपर में देखेंगे the subject type, like this is the subtype, supply, export, job work, SKD, CKD, recipient, इसके अंदर कुछ questions ना आए. उन questions को deal करने के लिए मैंने ये लगाया है because in time to come or then slide to come you will get to know, yes, there is, because see, basically e-way bill कौन निकालेगा नहीं निकालेगा, these all question will be dealt in time to come. So this is the just a demo of e-way bill कि e-way bill दिखता कैसा है. हिमांशु जी, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग पे मेरा एक क्वेश्चन है, ले सकते हैं अभी? सर एक बार थोड़ा सा हम टॉपिक शुरू करें because it's just 15 minutes. ठीक है श्योर. Give me some time, we'll take it in next 10 minutes, don't worry, right? Okay. Please note it down, sir, right? Sure. Cases when e-way bill is not required. देखिए there are few cases जहाँ पे e-way bill की जरूरत ही नहीं है. तो वो कौन कौन से केसेस हैं? बेसिकली द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉन मोटर व्हीकल, मींस अ रिक्शा पुलर इज टेकिंग अप गुड्स. तो रिक्शा पुलर का तो कोई नंबर ही नहीं होना, पॉसिबल ही नहीं है. तो बेसिकली आईसीडी और सीएफएस से यदि आप कस्टम टू कस्टम यदि जा रहा है, इंटर मूवमेंट हो रहा है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट. गुड्स ट्रांसपोर्ट अंडर कस्टम सुपरविजन अंडर अ कस्टम सील्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट. गुड्स ट्रांसपोर्ट अंडर custom bond from ICD port to one station to another. Let's say Mundra port of Mumbai to Delhi ICD. There is no requirement. Transit cargo transport from Nepal or Nepal to Bhutan or India, vice versa. So basically any material which is in respect to defense, there is no question on defense because defense is a priority sector of India. Very critical sector for India, right? एम्प्टी कार्गो, लेट्स से मैं गौरव जी के यहाँ पे एक डिलीवरी करके आया उनके सामान की,
और अब कार्गो वापस घर लौट रहा है, मींस आईसीडी में लौट रहा है, या जिस भी ऑनर का है, जिस भी सी लाइन कंपनी का है, उसके पास जा रहा है, तो देयर इज नो नीड टू, इफ इट इज एन एम्प्टी कार्गो, then the rail, when the goods begin transport by rail, where the consignee of the goods is the central government, state government and the local authority, there is no requirement because of government ka khud ka. Goods specified as exempt from e-way bill required the respective and union territories GST rule, kyunki limits change ho sakti hai, 50,000, 1 lakh, whatsoever the limit it is. The transport of the certain goods include certain specific goods. Specific goods means include the list of exempt supply. जो exempt product है, there is no need to raise a e-way bill. Annexure to 130 का मैंने एक next part में slide दे रखा है कि किस type के 138(14) किस किस की बात करता है. Goods treated as no supply as per the schedule 3, certain schedule to the central tax rate notification as well. Note that it is very important, guys. Part B, e-way bill के दो part है, Part A and Part B. Part B of the e-way bill is not required to be filled where the distance between consignor or consignee and the transporter is less than 50 kilometers. Means if the goods are transporting within a state, within same state, and the distance between one godown to another godown or the one client to another client is less than 50 kilometers, there is no requirement of e-way bill, issuance of e-way bill. So 138(14) की मैंने जब बात करी थी, rule 138, what is rule 138 says? Means ये वो goods हैं जिसके अंदर आपको e-way bill निकालने की जरूरत नहीं है. Basically the petroleum gas for the supply of household goods, cylinder जो हमारे घर में आते हैं, non domestic exempted category जो NDEC customers basically हो गए, kerosene oil sold under PDS scheme, post baggage transport by departmental of post, ज्वेलरी एक इसके अंदर आता है. बिकॉज सी आप जाइए ज्वेलरी लेने, यदि आप छोटा सा पार्ट लेट्स से 200 ग्राम्स या 500 ग्राम्स भी ज्वेलरी लेते हैं तो 15 लाख रुपए बन जाता है. क्या इसके ऊपर ई-वे बिल आएगा? बिकॉज व्हाट इज हाफ ग्राम, मतलब व्हाट इज हाफ केजी? हाफ केजी इज जस्ट लाइक you put in your bag, you put in your pocket, wherever you feel comfortable, take it. So there is no need of any vehicle to move the 15 lakh of product because article is too precious, so there is no need. Then the personal and household effect goods means जो मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ, there is no requirement. There are few requirements. We will later on see कि कौन सी वो requirements हैं. Then the coral, unworked and the worked coral. These are the few things जो exempted है. So basically, how to generate e-way bill? E-way bill can be generated on the e-way bill portal. The e-way bill portal is ewaybillgst.gov.in. We have to log in and it's very simple. So now come who should generate e-way bill. So the liability of e-way bill generation is registered person. Means e-way bill must be generated when there is a movement of a goods of more than rupees 50,000 in a value to or from a registered person. A registered person or a transporter may choose to generate and carry e-way bill even if the goods is less than 50,000. So basically it means there are few companies, there are few client of us where we have put in a system ki yaar any movement of the goods will require a e-way bill. Because client का काम ही कुछ ऐसा है, उस केस में वो प्रोडक्ट जा ही नहीं सकता गाड़ी के अंदर, वो जाएगा ही एक किसी व्हीकल के ऊपर. एंड पुलिंग इज नॉट ऑल्सो इजी, इट्स एन हैवी स्टफ. सो इफ एनी मोमेंट इज हैपनिंग, लेट्स से मोल्ड, एनी मोमेंट इज हैपनिंग, 50,000 से नीचे भी आप ई-वे बिल निकाल सकते हैं. बट द mandate is comes when the 50,000 and above is the value of goods. Unregistered person are also required to generate e-way bill. However, where a supply is made by unregistered person to a registered person, the receiver will ensure. Basically, गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल फंड है, जो रजिस्टर्ड है उससे कंप्लायंस कराएंगे. रिवर्स चार्ज भी कुछ ऐसी चीज थी, बिकॉज लेबर सप्लायर जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जो छोटे छोटे ठेकेदार होते थे, वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे.
आज यदि मैं बिकॉज सी बेसिकली जो ठेकेदारी का काम करते हैं ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग का जो काम करते हैं, दे आर द इन्फ्लुएंशियल गाय. ये थोड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे होते हैं, गुंडे बदमाश टाइप के मैं बोलूंगा, बट इट इज नॉट इन टेक्निकल टर्म बिकॉज एवरीबडी इज नॉट, JLL इज वेरी प्रोफेशनल कंपनी, सो वी कांट से गुंडे बदमाश. बट यस, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे होते हैं, तो दे जस्ट स्टार्ट देयर बिजनेस कि यार आपको मैं मैन पावर दूंगा, डोंट बी वरी, राइट. सो उन लोग का कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं था. टू क्रब एंड टू यू नो टू ब्रिंग दीज पीपल इन द ब्रैकेट ऑफ टैक्सेशन, दे हैव पुट अ रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट ऑन लेबर सप्लाई. इन द सेम वे अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं पकड़ेंगे यार, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको बोल दिया मेक श्योर आपको ई वे बिल जनरेट करना है. एंड ई वे बिल जनरेशन की लाइबिलिटी किसके ऊपर है? ऑन द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स. whosoever is doing a movement of whosoever is doing movement of goods is liable to create an e-way bill, liable to raise an e-way bill. ओके सर, क्या दो ही जन हो पाएंगे? गौरव भाई का एक क्वेश्चन आया था कि सर की हिमांशु भाई, हो सकता है ना कि सिर्फ रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड पर्सन दो ही जन तो नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर की भी तो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए. यस सर, ट्रांसपोर्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल इज टोटली डील विद ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर विल अमेंड इट. सो जितने भी लोकल ट्रांसपोर्टर थे, जो इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था ना, सबसे कोलैप्स्ड वे में चल रहा था. Only there are few very technically good companies were working in a way. But nowadays, what we have seen is every single transporter who wanted to grow their business or who wanted to be in market or in the business of transportation, they has to be compliant. So transporter carrying goods by road, by air, rail, etc. also need to generate e-way bill if the supplier has not generated an e-way bill. How is it possible supplier not generated e-way bill? There might be a chance कि वो 50,000 से कम हो. There might be chance कि unregistered supplier हो, right? उस केस के अंदर आपको ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ेगा. So we have made a small table जिसमें this will give a rough idea who will generate, when will generate, which part and which form. Every registered person under GST, ई-वे बिल कब निकलना है जी? बिफोर गुड्स. तो रजिस्टर्ड पर्सन नीड्स टू फिल पार्ट ए. फॉर्म नंबर इज ई-वे बिल 1. Registered person is consignor or consignee, and the mode of transfer may be anything, maybe owned vehicle, maybe hired vehicle, or the recipient or is recipient of goods. Before the moment of goods, part B will be filed. In the same way, the registered person is consignor or consignee, and the goods are handed over to the transporter of the goods. So before the moment of goods, part B fill hona hai, but yes, the registered person shall furnish the information relating to the part B of GST e-way bill 1. In the same way, transporter of goods, again, anything is everything which is before moment of goods. क्योंकि आफ्टर मोमेंट ऑफ गुड्स तो माल पकड़ ही लेंगे सर आपका, ये मत करिएगा. ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बिफोर मोमेंट ऑफ गुड्स, ई-वे बिल on the basis of the information shared by the registered person in a part A of form e-way bill 1. And all unregistered person under GST and the recipient is registered, then the compliance will be done by the recipient under recipient of the registered assessee. If the goods are transported for a distance within a kilometer of 50 kilometers or less, or within the same state, from the place of the business of the consignor of the place of the business to the transporter for the furtherance of transport, the supplier and the transporter may not furnish detail of the conveyance being within 50 kilometers, but the part B of the e-way bill 2 has to be filled in. If supply made by air, railway, ship, then the part A of the information is required to be filed.
So guys, there is a validity. क्या e-way bill long lasting है, चलता ही रहेगा? No. There is a restriction on the e-way bill validity. So dimensional means small. Dimensional basically big बड़े लोड वाले कंटेनर्स हो गए, स्मॉल लोड वाला ट्रक हो गया. टेम्पो भी हम छोटा हाथी जैसे दिल्ली में आपने नाम सुना होगा. These are also covered under vehicle, under the definition of vehicle. So the other than the over dimensional products, यदि less than 100 kilometers the distance, means the supplier and the recipient distance is less than 100 kilometer, the validity of the e-way bill is the 24 hours, which is 1 day. Then every additional 100 meter would be additionally 1 day. So over dimensional cargo means जिसके अंदर आपने कभी देखा होगा भारत पेट्रोल पंप का जो स्टोर होता है, पेट्रोलियम रिजर्व्स जहां मेंटेन होते हैं, आप नंगलोई साइड में यदि आप गए हो और T3 के आसपास यदि आपने देखा हो, तो जो ऑयल रिग्स, आपने जो ऑयल टैंकर्स हो गए, द टैंकर्स विच इंस्टॉल्ड in a structure in the base, they required basically a huge container, right? क्योंकि उसकी मूवमेंट हर जगह इजीली नहीं है, क्रेन रिक्वायर्ड है हर थोड़े थोड़े टाइम में. So उस केस में the distance travel distance is reduced from 100 kilometer to 20 kilometer. They understand it will take time. Then every addition of 100 would be, then every additional 20 kilometer would add 1 more day. The validity e-way bill can also be extended. Yeah, the generation of such e-way bill has to either 4 hours before the expiry or within 24 hours after its expiry can extended the e-way bill validity. Means you can amend. Let's say माल की moment नहीं हुई, you got to know boss, आपका goods तो आपके गोडाउन में ही पड़ा है, it is still not moved. You can go and amend your e-way bill. Basically now the details which is required to generate an e-way bill. गौरव सर नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपका वो क्वेश्चन भी टेक अप कर लेंगे. श्योर सर, कोई दिक्कत नहीं. राइट सर, राइट. सो डिटेल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल. सो बेसिकली ई-वे बिल के अंदर कौन कौन सी हमको डिटेल्स चाहिए? सो इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट बाय रोड, देन द व्हीकल नंबर एंड द ट्रांसपोर्टर आईडी. ट्रांसपोर्टर आईडी सिर्फ वो ट्रांसपोर्टर दे पाएगा जो रजिस्टर्ड है. एंड द ट्रांसपोर्ट बाय रेल, एयर और शिप, then the transporter ID, document number and the date of document. What is this document? Invoice, bill of supply, चालान. चालान किस केस में आएगा सर? चालान आएगा सर जिस केस में जॉब वर्क पे माल गया हो. लेट्स से माल जा रहा है आपका जॉब वर्क में, या आपका एक गोडाउन टू वन शिफ्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन. इन दैट केस चालान इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स. Clear? So e-way bill, basically this is an e-way bill entry form again. So basically what are the practical challenges nowadays? So the compulsory HSN, guys, this is very practical problem in respect to, I'll say कि डिपार्टमेंट के साइड से भी बहुत है. जब आप अपना असेसमेंट कराएंगे उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है ई-वे बिल में. जस्ट टर्नओवर वाइड इन्होंने पूरे टैक्स पेयर्स को डिवाइड कर दिया. So taxpayer up to a certain turnover required to put only 2 digit of the number. Then further it is 4 digit number. Then the guys who are or importers or the exporter need 8 digit of HSN code. So this problem will definitely in time to come we are going to see, because अभी तक तो assessment government की तरफ से start अब धीरे धीरे होने शुरू हुए, notices आने शुरू हुए. The compulsory HSN, the HSN code for the product in this e-way bill is mandatory. However, for the registered person with a turnover of less than 1.5 crore, it is not a mandatory requirement to show. अब आपको पता ही नहीं कि e-way bill के अंदर क्या जा रहा है. HSN code में just put the description of the goods. यदि आपको दिखाता हूँ e-way bill में, यहाँ पे आप नीचे product name, description, HSN, quantity and unit. If the client turnover is 1.5 less, 1.5 and 5 crores and less, there is no requirement to put that show the HSN on the invoices even.
system of acceptance and the rejection of e-way bill within 72 hours. It is very difficult for the buyer or the consignee to track the e-way bill and to ascertain whether they pertain to them or not, to cancel them within 24 hours. Illustrative यदि मैं आपको एक example के through समझाऊं, let's say purchase order for the different item are placed by the different person from different locations, right? The person managing the e-way portal may not be in a position to know that and confirm the order placed, कि order वो place हो गया या order place नहीं हुआ, या place होने वाला, आज उसकी delivery होने वाली है या नहीं delivery होने वाली है. In such circumstances, keeping a continuous, basically it involves cost to company as well. You need a guy who will take care of your GST, your e-way compliance at all time. Because goods की जो moment होती है, no entry zone है. दिल्ली में आपने यदि देखा हो तो काफी जगह no entry zone होता है, हर city में no entry zone होता है. तो वो no entry zone open होता है रात को 8 बजे के बाद. Means there is a guy who have to keep eye open कि boss, अरे यार एक GST नंबर नया जनरेट हुआ है, किसका है? There might be chance कि वो GST नंबर किसने गलत डाल दिया, right? So इसका भी GST का भी आपको reconciliation बनाना होगा with your supplies, with your sales, because जब आप अपनी GST 9 and 9C जब फाइल करेंगे उस केस के अंदर ये चीज आपको वहां पे आज नहीं तो कल, because see artificial intelligence is going to play great role in if I talk about कि government क्या करने वाली है in time to come. So because government will definitely take care of entire thing in a way कि आदमी की इंटरवेंशन होनी ही नहीं है, वो ई-वे बिल से ही रिकंसिलेशन करेंगे आपकी इनवॉइसेस, योर सेल्स, योर सप्लाई, योर परचेजेस एंड योर एवरीथिंग. सो दिस वुड डेफिनेटली बिकॉज यदि यहाँ पे मिसमैच हुआ ना तो देन दिस विल गिव एन अ हैंड एंड दिस वुड बी ब्रीड रेड टिपिज्म एंड करप्शन. दिस विल डेफिनेटली इन्वॉल्व करप्शन. ये आप सबको पता है, मेरे को ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है, हाउ वी हैंडल केसेस. So likewise, if partial let's say if partial dispatch is made against a particular order, then it would become even more difficult. यार क्वांटिटी जानी थी, डिलीवर होनी थी 50, वहां डिलीवर हुई है 45, 2 शॉर्ट हो गई, ब्रेक हो गया, this that, then again it is a difficult thing because ई-वे बिल जब आपने बनाया उसमें आपने दिखा दी कि 50 क्वांटिटीज, और आप जैसे ही ई-वे बिल आपने जैसे हटाया ई-वे बिल, मतलब जब एक्चुअल डिलीवरी हुई तो उसमें दो क्वांटिटी से लेट्स से कोई ब्रेकेज आ गया या शॉर्ट आ गई क्वांटिटी, देन यू हैव टू जनरेट अ क्रेडिट नोट फॉर द सेम. एंड नाउ द अमेंडमेंट ऑफ ई-वे बिल इज आल्सो नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस वुड बी अ प्रैक्टिकल चैलेंज. इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम रिकंसिलिएशन इशू which I told you, मतलब गौरव भाई आपको मैंने अभी बताया था कि रिकंसिलिएशन वाला एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट अगेन ये बड़ा चैलेंज बनेगा सर आगे. सर ये चैलेंज अभी भी है, आगे भी आई गेस रहेगा ही, द वे इट इज गोइंग. द रिकंसिलिएशन इशू इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इन रिलेशन टू प्रिंसिपल सप्लाई ओवर सर्विस. अब इसको यदि मैं इजी भाषा में बात करूं, इजी लैंग्वेज में यदि हम इसको समझने की कोशिश करें, एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है, कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई कमर्शियल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर ने परचेज तो किया वेरियस मटेरियल लाइक लेट्स से सरिया, स्टील, सीमेंट, पाइप्स, पेंट, दिस दैट मटेरियल व्हिच इज जनरली कंज्यूम्ड फॉर for building a material, for buildings or for the construction purpose, right? जब वो अपना इनवॉइस आगे रेज करता है तो उस टाइम जो वो रेज करता है दैट इज अंडर WCT, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और द कंस्ट्रक्शन सर्विस और द रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस. रिपेयर मेंटेनेंस आल्सो इंक्लूड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, राइट, इन अंडर WCT, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. इन दैट सिनेरियो इट वुड बी वेरी टफ कि क्या आया और गया क्या, बिकॉज इससे तो ट्रैक ही नहीं हुआ ना. What comes in is the goods, what goes out is services, and there is no e-way bill on services. सर्विस तो ट्रैवल करती नहीं है किसी व्हीकल से, टेक्नोलॉजी से ट्रैवल करती है, माइंड से ट्रैवल करती है, राइट?
So this is a gist of everything, whatever it mentioned here, right? So in case where the goods are meant for consumption in the supply of the services, say the construction material used in providing the construction service, or where the supply of the service from the principal supply, where the material moved for repair and maintenance, where goods repair is the principal supply. The reconciliation of the invoices with the e-way bill would be huge challenge, and this mismatch may necessitate scrutiny assessment. ये scrutiny assessment आपका थोड़ा tough कर सकती है. And then there is one more problem, which is like timely update of the vehicle number by the transport. Let's say आज हमने रेस कर दिया, ट्रांसपोर्टर के पास में माल पड़ा रह गया एक दिन के लिए, उसके बाद तो लेट्स से, और माल आपका जाना है विद इन 100 किलोमीटर रेंज, उसकी वैलिडिटी इज 24 आवर्स. आप उस केस में क्या करेंगे? देन ट्रांसपोर्टर अमेंड नहीं कर पाएगा, देन वी हैव टू रेज अगेन a new e-way bill. So basically these are the few FAQs. Sir, before taking FAQs, I really want to address your that concern. Please sir. सर मेरी भी है, और एक पहले किसी की क्वेरी आई हुई है, मैं वो ले लेता हूँ. मितेश दोशी जी की क्वेरी है, whether there is no requirement to generate e-way bill for supply of goods to a shop customer which is within 50 kilometers and within state. Within state and within 50 kilometers, there is no requirement, sir. सर पार्ट ए की तो रिक्वायरमेंट आएगी ना, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है. इफ द ट्रांसपोर्टर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट देयर, बट आई विल सजेस्ट, एंड as I always suggest, to generate e-way bill. What happens is 50 kilometer, then what happens, let's say आपका माल पकड़ा गया during the transportation, right? Then the GST officer will always emphasize कि इसकी वैल्यू 50,000 है ही नहीं, इसकी वैल्यू 50,000 से above है. So if the chances of the chances of trapping in this thing would be less if we generate e-way bill. If the same is within the 50 kilometer, the part 2 is not required, because ट्रांसपोर्टर आईडी की जरूरत नहीं हो सकता है छोटा, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, तो आप एक अपने ओन व्हीकल से, या फिर आप छोटा हाथ, जिसे हम छोटा टेम्पो बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, राइट, दैट आप उसके थ्रू भी इसको ट्रैवल करवा सकते हो, राइट. So within 50 kilometer as such, so basically as such there is no requirement, but yes, part A is mandate. ठीक है सर. सेकंड क्वेरी है जो अभी आपने बताया, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ऑटो सिस्टम है, वो अपने आप ले लेता है अगर आपने 2 consecutive पीरियड की रिटर्न्स फाइल नहीं करी, राइट. और सर कोविड पीरियड में क्या होगा? बेसिकली कोविड पीरियड के लिए इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू करी. सर कोविड पीरियड में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंड कोविड पीरियड में क्या हुआ कि सबकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई, और जिसका ऑलरेडी जो ब्लॉक पड़ा था उसको वो चैलेंज आया भी है. और प्रॉब्लम इज, जिस टाइम ये केस हम लोग के साथ भी हुआ, हम लोगों ने टिकट रेस करी, तो उस टिकट रेस के ऊपर भी क्वेश्चन, मतलब वो चीज सॉल्व नहीं हुई. So ultimately what we have to do at that moment, because the client was in the necessity supply of the necessity items, and in that scenario what happens is, then we filed both of the returns, both of the 2 months return, and whatever the taxes has to pay, we have paid, and accordingly the same has been opened. And because in the COVID period starting, what happens, you can't talk, you can't be in contact with your jurisdictional officer, as nobody was in department. This was the biggest challenge, right? True. And the only solution at that point of time is you have to file your return. अब वो फाइल कैसे करना है, there are few things, वो सर हम ऑफलाइन उसको कर लेंगे. वो मैं यहाँ बताऊंगा तो that is आप समझ सकते हैं, I guess. वो मैंने भी करी है सर. वो मेरा वही था कि इन्होंने कोविड पीरियड के लिए ऑटो वाला पार्ट रिमूव नहीं किया. मैनुअल होता तो वो ठीक है, हम उस पे क्वेरी रेज करते, वो शायद वहां से कर भी देते. राइट. वो सिस्टम इनेबल्ड सर, इट इज एन आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर. आई एम टेलिंग यू सर दैट आफ्टर फाइलिंग इट within 24 hours the same will be automatically enabled. The same link of e-way bill generation is automatically enabled. तो जहां पे भी जब भी मेरा क्लाइंट से डिस्कशन हो रहा था ना, मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा अपने रिटर्न में डिले कर, बाद में e-way bill में इशू आएगा. Right. He even can't issue e-way bill, sir. True. If there is no e-way bill, and there is for sure there is a possibility कि एक consignment नहीं पकड़ा तो दूसरा consignment पकड़ लेंगे, but पकड़ जरूर लेंगे. There is no escape for sure. There is no escape. Right. So is there any more query, sir? सर एक क्वेरी और है कि अगर हमने e-way bill जनरेट नहीं किया, मान लो मेरी सप्लाई भी जेन्युइन है, बाय एनी चांस e-way bill स्किप हो गया, या मैंने जल्दी में
अर्जेंट डिलीवरी थी वो मैंने निकाल दी और वो डिलीवर हो भी गई पॉइंट पे। स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ नॉन सप्लाई के केस में, कि मेरे को जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था सर्विसेज के केस में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में, मुझे गोडाउन से माल पहुंचाना था साइट के ऊपर, मैंने माल डिलीवर करा दिया। The penalty would be 10,000 rupees for is attracted on the same. Sir, अब point is मेरे को लगता है ये बहुत डिटेल्ड वर्किंग यदि डिपार्टमेंट आज के टाइम करता है, if department do every reconciliation of your supplies or the job work material जो हमने चलान की यदि स्क्रूटनी प्रॉपर होती है, and if they link the same with your e-way bill portal or the system, then only these things will be trapped. Otherwise it is very tough to track these things. और नॉर्मल केस में अगर मैंने जनरेट भी नहीं किया तो फिर मेरी 10,000 की पेनल्टी है और नथिंग मोर देन दैट। Nothing more than that. There is no confiscation. There is chance of confiscation of the goods if transporter, let's say if transporter forgot to, if transporter forgot to generate e-way bill. Sir, my point is कि goods deliver हो गए। नहीं deliver हो गया, I got your point sir, deliver हो गया, in that scenario 10,000 would, आप मान के चलिए, just there is no need to make provision, there is need to make provision at the mindset की boss there could be a chance कि हम लोग के 10,000 का penalty लग जाए, right, because see गलती इंसान, sir, we are the kid of human only, we are humans only, right, so there is a chance, or definitely there would be a chance, and there are a lot of chances कि जिस time हम e-way bill भूल गए होंगे, इसके लिए if you is it possible to raise a credit note and then if the matter was not so old, then you can just do the re-invoicing so that for safer side basically आपका ठीक है सर। लेकिन अगर हम क्रेडिट नोट भी रेज so basically उसमें हमारी डबल हो जाएगी, क्योंकि हमें परचेज सेल रिटर्न के लिए भी ई-वे बिल जनरेट करना होगा। नहीं सर, सेल नहीं, आज की डेट पे आपको सेल रिटर्न करना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो आज के टाइम करेंगे, उस टाइम आप ई-वे बिल बनाइए, देन जस्ट देन रीसेंड इट टू देम सर। अदरवाइज सर 10,000 की पेनल्टी इज डेफिनेटली वुड बी देयर, मतलब वो डेफिनेटली तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बिकॉज दिस आई विल से कि यस देयर इज एन स्कोप ऑफ पेनल्टी, बिकॉज आई हैव because I am not pro for that कि हाँ यार ये मेरे को लगता है कि बड़ा टफ है, but yes if यदि हम, because we are the we are chartered accountant, what law says is 10,000 penalty would be levied. अब वो देखना पड़ेगा in time to come how much penalty going to levy or not. So but yes there is a provision of 10,000 rupees which you have to make sure कि हाँ there is a chance, right? So this is it. So can we move forward sir? Yes sir, we can continue. Right. So basically these are the few FAQs which I really want to take for the selection of subtype in case of outward supply. यदि आपने ई-वे बिल देखा होगा, आपको मैं फिर से उस फॉर्मेट में ले जाता हूं, there the transaction type is outward and inward. It means e-way bill will be generated by the taxpayer or by the assessee whosoever is doing the movement of goods. Let's say if I give you an example, Mr. A made a sales of 10 lakh rupees from his godown. It would be an outward supply, being he is a registered assessee. In the same way, if I am an importer and I am importing some stuff from outside India to India, then in that case, the e-way bill generate would be inward supply, because custom will never send your material to your house, to your godown. This is our responsibility to do the clearance from the custom. Then the same e-way bill will be generated under inward supplies. And if I talk about subtypes, the same would be supply. If it is an export, then export supply is normal sale. Job work is like for, if we are sending some material for job work, then job work. And then SKD and CKD is there. What is this SKD and CKD? So it's semi knockdown and completely knockdown goods. Hello. हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी? Actually, I guess some connection issue. Anyways, so what is
what is SKD and CKD, or and what is line sales? There are 2-3 things. एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ ये bill. The portion of this SKD CKD, recipient not known means माल निकल गया, आप कहाँ उसको बिकना नहीं बिकना, लाइन सेल्स के अंदर जैसे बिकेगा बिकेगा. For own use means खुद के कंजम्पशन के लिए. For the exhibition, let's say कोई माल ट्रेड फेयर में जा रहा है, then you have to put the exhibition, you have to select sub type would be that. And what is line sales? And others would be other. There may be some specific cases. What is line sale and CKD, SKD? These are the some specific point which I want to address. See the line sales को यदि मैं example के साथ आपको सिखाऊं या बताऊं, तो line sales are like chain of Pepsi, Coke, Haldiram. So what happens? जब इनका ट्रक लोड होता है and then they start movement. ऑर्डर जहां जहां पे आया हुआ होता है वो वहां जाते हैं. लेट्स से हल्दीराम के 10 बॉक्सेस देने थे किसी एक्स सप्लायर को, एक शॉप पे देना था, देन फिर आगे उसको कुछ और देना था. मदर डेयरी की यदि मैं सप्लाई करूं, दे ऑल आर लाइन सेल्स, आर कवर्ड अंडर लाइन सेल्स. एंड व्हाट इज सीकेडी एंड एसकेडी? सीकेडी इज कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और सेमी नॉकडाउन कंडीशन. मींस लेट्स से मैंने बड़ी मशीनरी को पार्ट में दे दिया, राइट? द लेट्स से फैन, इफ आई टॉक अबाउट द फैन, then the different part, motor मैंने किसी से मंगवाई है, part किसी से मंगवाया है, and then assembly will be doing, we will do assembly on a later stage. That is the SKD and the CKD supplies. One then is e-way bill is required if the value of shipment per customer per day exceed rupees 50,000. How we will take multiple invoice under single e-way bill? See, so basically that depends on whether the supplier himself is a transporter or not. अब इसमें ये देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर कौन कर रहा है. Transporter, who is transporting the goods? If he is the transporter, then he is required to generate e-way bill for all the invoices. But if not, then the transporter will require. तो यहाँ पे वो केस आ जाता है जब who are all are responsible for generating e-way bill is the transport, right? So there are a few more questions which these are all are questions जो सर मेरे को लगा या मैंने जहां से पिक किया मैंने वो डाल दिया इसमें. So what is the criteria of value of consignment? The criteria of the value of the consignment, the value of the consignment is, that is very simple. Invoice value exceeds 50,000, or the vehicle carries goods against the multiple invoices. Let's say there is a big truck, उसके अंदर मैंने 5-10 बंदों का सामान ले लिया, 5-10 सप्लायर का सामान ले लिया, and the consolidated value, aggregate value of that vehicle carries 50,000 and above, then it is required again. So if either of the person of the above point is satisfied, we should generate an e-way bill. Then is there any responsibility and the liability for the transporter in e-way bill system? Yes, ये गौरव सर मैं आपको बताना चाह रहा था. Yes, there is a liability. If the transporter doesn't generate the e-way bill in the circumstances when it is required, he may face penalty which is up to ₹10,000 or the tax sought to be evaded, whichever is greater. And the seizure of vehicle is also possible. जो भी आपका ट्रांसपोर्टर है, there is a chance कि हम उसका vehicle ही confiscate कर लें. So that is it. Gaurav sir, any question in terms of e-way bill? Do let me know. Sir, मेरे question है sir. Or should we move forward for ISD? Sir, मेरे 2 question. Because the time. Please sir. सर एक तो अगर जैसे हम लोग खुद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और हमने देखा है कि लोकल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो आपको कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी वगैरह नहीं देते और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो ये एक यूनिक रजिस्ट्रेशन लेना होता है हर ट्रांसपोर्टर को, वो लोग वो भी नहीं लेते. उस केस में हम ई-वे बिल कैसे जनरेट करें? राइट, तो पार्ट ए ही जनरेट होगा, ई-वे बिल निकल ही नहीं पाएगा उस केस में. तो फिर हमें ओन ट्रांसपोर्टेशन दिखानी पड़ेगी, हमें उनका व्हीकल नंबर डाल के ओन कि हम खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. उनका व्हीकल नंबर आप डालिए और जस्ट शेयर द रेस, अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे. जी, दैट्स इट. द recipient GST number, my GST number, the supplier GST number and so on.
ठीक है। और सर अगर ई वे बिल में मेरे माइनर वो एरर हो जाते हैं, सपोज मैंने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया छोटा सा, अब जैसे मैंने XYZ 1920 और फिर ई वे बिल नंबर 00 आता है, अब वो मैंने 1920 स्किप कर Right. दिया, या मैंने इनवॉइस डेट गलती से गलत सिलेक्ट कर ली। सर देखिए, if system see these kind of mistake, let's say जैसे 001 होना था और आपने 01 कर दिया, so वो अंडरस्टूड है, तो मेरे को नहीं लगता अननेसेसरली आप उसके लिए एक नया इनवॉइस रेज करें, बट देयर आर फ्यू केसेस व्हिच वाज रिपोर्टेड लाइक कि द क्लाइंट हैज डन द सेम मिस्टेक, द इनवॉइस नंबर वाज 09 and invoice number was 009 because it was a manual invoice, जो पहले not that was not a computerized invoice, and गलती से ई वे बिल में उसने सिर्फ 9 डाल दिया, यूपी के बॉर्डर पे गुड्स को पकड़ लिया। देन आज उन ऑफिसर को समझाने के लिए वी हैव टू रीच टू द कमिश्नर लेवल कि सर दिस इज व्हाट 9 is 9, whether is it 009 or it is 0009 or it is only 9, it is just a number only, right? तो मेरे भी एक क्लाइंट के साथ हुआ था, उसने सिर्फ इनवॉइस डेट गलत डाल दी और उसके गुड्स कन्फिस्केट कर लिए। कन्फिस्केट सर ये बिल्कुल हुआ है इस केसेस में, और if you fight on above level that will be released if everything is correct at your end. It Taxes was a are paid. mistake which is very nominal mistake, the same should be should be ignored, but somehow the enforcement department is not doing so. So guys, let's move to the second interesting topic. सर एक मितेश जी की एक क्वेरी है, मैंने उनको अनम्यूट किया है, उनकी तो मितेश जी आप उनसे पूछ सकते हैं प्लीज। हिमांशु जी हेलो, कैसे हो? ऑल वेल सर, प्लीज बताइए। सर मुझे कल एक था कि 50 किलोमीटर वाला जो था ना डाउट, कि अगर मैं मेरे कस्टमर जो है, आपका वॉइस इको कर रहा है। हेलो हेलो मितेश दोषी जी, आपकी हेलो योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, प्लीज। हेलो अभी हेलो मितेश जी आप बताइए, मैं सर से टेकअप कर लूंगा, आप एक बार बोल दीजिए क्वेरी अपनी। मितेश जी, आप गौरव जी को 101 लेवल पे एक बार प्लीज इनको आप टेक्स्ट कर दें। लेट्स मूव दिस आईएसडी टॉपिक फर्दर, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उसको लेना है, तो आप मीनवाइल हम उसको जैसे ही गौरव जी आपको कन्वे कर देते हैं, प्लीज डू लेट मी नो, विल डेफिनेटली रिमाइंड, राइट? सो गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज आईएसडी, व्हिच इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. So input service distributor means section 260 of CGST Act deals with. Input service distributor means an office of the supplier of goods or services, or both, means goods or basically anybody which receive the tax invoice towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purpose of distribution of the credit of CGST, SGST, UGST, IGST paid on the said services to a supplier of taxable goods or services, or both having a same PAN of the said office. So basically services की जो input आया हुआ है, that is input of services only. इस services को we have to allot, हमको कैसे कैसे इसे allot करना है अपनी branches में, उसका ये पूरा concept है, हम उसको example के साथ बड़े तरीके से clear करेंगे, don't worry, in slide to come. So basically, who is an input service distributor under GST? And in ISD is a business which receive invoice of service used by its branches. Let's say I have 5 branches in India, and मेरी हर branch पे एक software की service मैंने ले रखी है, and that is the software service used by every single branch. This is received, used by the branches, and it distribute the tax paid to such branches on the proportion basis by issuing an ISD invoices. So basically जो services सारी branch ने की है और जो bill किया होगा वो bill किया होगा to the HO, and HO is let's say located in Delhi. Then in that scenario HO को जो bill आया और जो services use हुई है वो पूरे branches में, सभी branches pan India level पे use हुआ है, तो उस credit को pass on करना है to the respective branch. So this is the concept of ISD. The branches can have different GSTNs, but having the same PAN number as the ISD. So branches and ISD is not the two distinct people. They are the common people. They are the common entity having same PAN, but having multiple registration.
Let's understand with an example that say head office of the ABC Limited is located in the Bangalore and the branches is at Chennai, Mumbai and Kolkata. The head office incurred an annual software maintenance expense on behalf of all of its branches. Means सभी branches की services, so software service लिए HO ने लिया है and सभी branches को वो services मिल रही है. Let's say हल्दीराम के ऊपर जो POS software चल रहा है हम उसकी बात कर लेते हैं, right? Just giving an example because resto में तो it's blocked credit. There is no credit as the supply is at a rate of 5%. So I'm just giving an example to understand कि किस चीज की services की मैं बात कर रहा हूँ. Used by all its branches, the input tax credit of the entire service cannot be claimed to the Bangalore because services जो उसने दी है उस service का consumption कहाँ हुआ है and GST is a consumption based taxation and the consumption based says कि let's say यदि कोलकाता के अंदर कुछ consumption हुआ है तो tax मिलना किसको चाहिए कोलकाता state को, right? In the same way the same has to be distributed to all the three branches and the head office at the Bangalore is the ISD. Head office जो Bangalore का head office है that will be treated as ISD. Condition to be fulfilled by ISD. What are the conditions which they have to fill? So basically it's very simple. ISD के लिए आपको एक registration लेना पड़ेगा. The registration would be again that wherein the specify under the serial number of 14 of the REG01 as ISD only then he shall be able to distribute the credit. ISD is an facilitator. मेरे हिसाब से यदि layman में यदि मैं बात करूं तो ISD is an facilitator who pass on the duties paid on the input services to their respective branch on the basis of their consumption. मतलब consumption के basis के ऊपर सर्विस इनपुट को उन्होंने पास ऑन किया. क्यों गौरव जी, गलत तो नहीं है? राइट सर. सो इनवॉइसिंग क्या होगा यहाँ पे? द ISD कैन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ द टैक्स क्रेडिट टू द रिसिपिएंट as stated by issuing on the ISD invoice. So there would be a document. So in GST it is very clear. If you want to pass on any credit, either you have to issue tax invoice, bill of supply, or the challan, or a transfer note of credit, right? The return, is there any return? Yes, there would be a GSTR6 is the return which have to be filed 13th of the succeeding month. But इसको 13 आप मान के मत चलिए, ये आज तक तो 13 में अभी तक हुआ नहीं, because every month it is got delayed or it is got extended by the, not delayed, yeah, because it is extended by the department, right? Because ये filing होना है after once we got the credit of input services on our portal only. So this is the return. What are the other conditions to fulfill? The recipient of the tax credit can view. Basically अब ये दिखेगा कहाँ पे? Same जिस तरीके से हमारे normal supply 2A के अंदर reflect करती है ना, same way respective branch will the same will be reflected to the respective branch in the respective 2A. ISD need not to file any, yeah, there is no need of any annual return. Annual return will be filed on a PAN based, and ISD there is no separate PAN. The PAN would be common, but yeah, कुछ branch को हम ISD कर सकते हैं. अब there is no concept कि ISD सिर्फ एक ही हो सकती है. There might be possible ISD अलग अलग हो. कैसे, किस केस में? Let's say सॉफ्टवेयर हेड ऑफिस मेरा है, जो पूरा मैं सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रखा हूँ, सर्वर्स मेंटेन कर रखा हूँ दिल्ली में. मेरा जो इंजीनियरिंग टीम का पूरा जो HO है दैट इज बेंगलोर, बिकॉज आईटी हमारा इंडिया में आईटी हब इज बेंगलुरु. तो ISD कुछ बेंगलोर, यदि कोई ISD लेना चाहता है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, वो दिल्ली भी ले सकता है. ISD वो मतलब बेसिकली अ सेम पैन हैज मोर ISD. देयर इज अ चांस कि मोर ISD उसके अंदर मतलब एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो. The total credit distributor shall not exceed the credit award. ये बड़ा सिंपल है. जेब में 100 रुपए होंगे तो 100 रुपए ही आपको खर्चने हैं. It means the maximum amount of transfer of ICD would be the maximum input which is with us. The credit attributable to a recipient shall be distributed only to that recipient. So basically this is very clear. Let's say in the above example, Kolkata branch required any specific service and the bill was made in the name of HO. बहुत बार होता है, आपने देखा होगा, right? In that case, the respective tax input of that input service will only attribute to the Kolkata branch only. Bangalore has no right to claim that input because the service consumed in Kolkata
should be, the tax benefit should be to that government only. The right of that tax collected is with the government of Kolkata, West Bengal, not with the Bangalore. So in that scenario, the entire invoice has to pass a credit to the Bangalore Kolkata branch, right? So basically, Rule 39 says what is the manner of distribution. So manner of distribution, there would be return which will be filed in form number GSTR 6. So basically, मैं इसको इस टेबल से समझाना चाहूंगा, because this table says that ISD, let's say ISD and the recipient of the credit are located in the same state. Let's say Mumbai, Maharashtra, Pune and Mumbai, both are in the same state. इस केस में यदि मेरे को रिसिप्ट मेरे को आईएसडी का जो बेनिफिट क्रेडिट पास ऑन करना है वो मैं कैसे करूंगा? द इनपुट क्रेडिट विद आईएसडी इज आईजीएसटी, मींस तो उसको मिली है दो परचेजेस जो उन्होंने इनपुट सर्विसेज ली है, वो यदि उसके उस बिल के ऊपर, उस सप्लाई के ऊपर आईएसडी लग के रहा है, या फिर वो प्रोक्योर किया है विद इन सेम स्टेट, मींस सी और एस लग कर आया हो, इन दैट केस the distributor to the recipient of credit will pass on the same credit. Means the recipient, means the Pune will get IGST claim, and the C and S, CGST as CGST and HGST respectively. Then the recipient of credit, let's say Bangalore and West Bengal, the recipient of service would be at a different state. When the ISD and the recipient of credit are located in the different states, yeah, different union territory, the input tax credit of IGST, CGST, SGST should be distributed to the recipient in the following manner. Manner would be what? Anything which is charged, it is an interstate supply, only IGST has to charge, right? So कुछ भी input आया हुआ है, सारा input means software services related input or any, let's say engineering, let's say पैन इंडिया लेवल पे मैंने पूरा एक मेरी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, दो मेंटेनेंस इज सब्जेक्ट टू 17(5), बट मान के चलिए उसका इनपुट अवेलेबल, इन दैट केस देयर इफ इट इज एन आईजीएसटी सप्लाई, बिकॉज जनरली इस केस में क्या होता है, बिल जो होता है दैट इज जनरली बिल्ड टू एचओ ओनली, देन इन दैट केस द एचओ विल take an ISD registration and pass on the credit to the branch where the same is consumed. So the recovery, okay, is there any possibility कि आपने ISD के अंदर credit ज़्यादा pass on कर दिया? There might be a possibility, right? When the credit distributed by the ISD is in excess of the available credit which is for distribution, that will be recovered with interest, and with interest as per section 51, and the interest would be the normal interest as per the section 51, and the interest would be 18% from the date जिस दिन उसने excess pass on किया था to the date it is reversed again, and the credit in excess to the supplier, that, yeah, definitely, and the same will be recovered from the supplier. So basically the branch is not going to with that interest, the interest would be paid by the supplier, who has passed on that credit. Now the case study. So let's take an example, and this will definitely going to clear everything which is in respect to ISD. So that ABC Limited having an head office at Mumbai, means state Maharashtra involved. Then 3 different units of the state. One is Mumbai, Jabalpur, Delhi. Operational in the current operational during the year, and ABC Limited furnish करता है कुछ ऐसी information in the month of July 17, let's say, and ask for the permission to distribute the below tax credit. So basically the CGST paid on the service used only for Mumbai unit. It means only for unit का मतलब हो गया sir, it is very much clear, इसका credit का जो input मिलेगा सिर्फ मुंबई को ही मिलेगा, and IGST and SGST CGST का जो total amount of paid services है, which is 12 lakh in the different, and that is a common credit, 12 lakh,
and the total number of the turnover is 3 units ka is total number is actually there is a mistake because it is 100 this is not 10, it is 100 lakhs, and the turnover of the Mumbai is 50 lakhs, Jabalpur is 30, and the rest is Delhi is 20. So basically how we are going to because see, if कॉमन क्रेडिट यदि कुछ है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट पास ऑन करेंगे, दैट विल बी पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ द ब्रांच डिवाइड बाय द टोटल टर्नओवर ऑफ द company. So this is the chart which will definitely going to clear everything. CGST paid in the for the point number 1 says the CGST services exclusively for the Mumbai. The credit will be at the hand of the credit eligible credit is at the hand of Mumbai only. If IGST, SGST paid to that will be divided in the pro rata basis in the ratio of 50, 30, 20. 12 lakhs into 50, 50% is the Mumbai, Jabalpur will get 3,60,000. This will be the total GST credit. I hope it is clear. So the above note, basically, the credit distributed is on a pro rata basis. Turnover of all the unit is as under, because it is very simple, 50%, 20%, this is just a calculation for the above example. So what is the relevant period of credit? हमको distribute करना कब है? In the same financial year. Basically, if the recipient of the such credit has turnover in their state preceding financial year of the year in which the credit distributed is same financial year. आपका जितना credit होगा आपको तुरंत आपको pass on कर देना है. So if some or all recipient do not have any turnover in their state in the preceding financial year in which the credit distributed, then the last quarter, जो latest quarter होगा, basically basis किसे बनाना है turnover के लिए? Such financial year, last financial year, preceding the financial preceding financial year, और यदि last financial year में turnover is 0, then the latest जो quarter है, which detail of the such turnover all recipient available, जो latest turnover अपने पास available है, हम उसको basis बना लेंगे जिस महीने में हम इसको distribute कर रहे हैं. Gaurav sir, any question in that as of now? सर नहीं, अभी तक कोई clear है. Yes, नहीं. Gaurav sir, this is the basically कुछ few questions. I guess that will clear every single doubt in respect to ISD. So ISD basically will the input service distributor be required to separate registration other than the existing taxpayer? Yes. ISD registration is for one office of the taxpayer, which will be different from the normal registration, right? Can credit distributed to only revenue generating units? No. The revenue generating unit has the GST liability. So rightly, the ITC on those services used must be allocated to them used for setting of the liability only. But in respect of what? In the pro rata basis, which is in the in ratio of turnover. Can a taxpayer have multiple ISD? Yes. मैंने आपको बताया था किस केस में. Let's say marketing division अलग है, security division अलग है, आपकी engineering division अलग है, तो उस केस में आप ISD because consolidated हो सकता है HO का मतलब consolidated जो invoice आ रहा है वो pan India level पे एक ही जन को आ रहा है. In that scenario, yes, we can do. So basically, they can company have multiple ISD? Yes, different offices like marketing division may apply the separate ISD. What are the consequences of the credit distributed in contravention of the provision? What are the consequences? The credit distributed in the contravention of the provision could recovered from the recipient to which it is distributed along with interest. इसमें generally क्या हो सकता है? The company may play foul. Let's say there is a branch in which there is lot of ITC, and there is a branch where the output liability is more. In that case, company may do कि यार अभी funds are tight, so let's pass on their credit to the branch where the liability is more to set off that liability. If the same is done wrongly, the same will be received by that recipient of this branch.
जिस ब्रांच को आपने इनपुट दिया था उस ब्रांच से हम रिकवरी करेंगे along with interest. And what are the do in ISD need to file a separate statement of output and inward supply with their return? No. ISD need to file only a return, which is form number 6, form GSTR 6, and the return has the detail of the credit received by them. क्या उनको आया and क्या उनसे उन्होंने distribute किया. That is it. Since the return itself cover these aspects, there is no requirement to file a separate statement of the inward and outward supply. Just the numbers of. Sir, any questions? सर आईएसजी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है. आईएसजी काफी क्लियर है. आई गेस काफियों को आईएसजी क्लियर है टॉपिक भी. और आपने जिस तरह से अभी So there was a question with I guess मितेश Mr. जी. Doshi. मिस्टर दोषी है. मितेश जी का क्वेश्चन था सर, जो अभी उन्होंने 50 किलोमीटर वाली लिमिट पूछी थी. वो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि 50 किलोमीटर की जो लिमिट है वह फ्रॉम कंसाइनर्स प्लेस टू ट्रांसपोर्टर है या फ्रॉम कंसाइनर्स प्लेस टू कस्टमर है. क्योंकि जो प्रोविजन 3 टू रूल 183 सब रूल 3 कहता है, वो कहता है फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंसाइनर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन. 50 किलोमीटर की जो लिमिट की बात करता है. Yeah, that is for the furtherance of to the transportation only, sir. तो बेसिकली जो 50, अगर वो लेस देन 50 किलोमीटर होगा, अगर ट्रांसपोर्ट कस्टमर को मैं दे रहा हूँ, तो उस केस में ई-वे बिल बनाना हमारे लिए जरूरी है. ई-वे बिल बनाना जरूरी. मितेश जी, आई गेस आपकी क्वेरी का आंसर हो गया है. ई-वे बिल उसमें मैंडेटरी है. So sir, let's move to topic which is for cross charge. I guess most important topic basic, of the day. So yeah, so I have I guess how much time we have, sir? Sir, वैसे officially तो 15 minutes है, but we can continue, no issue in that. क्योंकि जो ये टॉपिक है, I guess इसमें सबका attention होगा. Right, sir, right. So sir, before starting cross charge, let me have some water, please. सर क्रॉस चार्ज को यदि हम समझना चाहें ना, बेसिकली क्रॉस चार्ज को यदि हम टेक्निकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस चार्ज का एक बैकग्राउंड देता हूँ. सो क्रॉस चार्ज कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ. सो लेट्स से एचओ receives any services, right, with let's say advertisement services, or which services includes like let's say मेरे को Action Shoes is a company. Action Shoes अपने shoes का branding कर रही है, and that branding is for everywhere in India. Television telecast हो रहा है, right? Then इस केस में generally वो because every state is contributing some turnover and some sales, right? And the bill raised to H only. So basically इस केस में आपको इनपुट जो है, जो आपकी एचओ ने ले लिया, इस केस में इनपुट को एचओ एक इनवॉइस रेज करेगी टू द रेस्पेक्टिव ब्रांचेस and then branch will get the credit on the same. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. अभी कोविड चल रहा है. कोविड के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कराई. यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस की सर बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस इज 17(5) prohibited, right? There is no input of under health insurance. Let's say health insurance में अब मेरी एचओ ने हेल्थ इंश्योरेंस करा ली, और Himanshu Mohta and Associates has let's say we have 3 branches in a state of Rajasthan, Delhi and Haryana, right? So Haryana has 3 employees, Delhi has 5 employees, and rest of the 2 employees in Rajasthan. Then basically जो हमने input use किया है
that used input to basically ineligible hai. There is no input available at all, but the service is for everywhere, for the rest of the branches as well. Then the HO means the Delhi HO has to raise an invoice for 2 employees of the state of Rajasthan and 3 employees for the state of Haryana. Under what the services will be, because iska jo bhi invoicing raise hogi na sir, that will be other professional, the HSN would be other professional services, and other professional services is eligible for input. So वहां पे उसको वो उसका input मिल जाएगा. In the same way electricity supply. So let's start with the document only. So it's a cross charge on the expenses, basically cross expenses. And अभी sir cross charges including employee salary as well. ये आपको भी latest में अपने अभी director remuneration की भी बात हुई थी, director salaries की भी बात हुई थी. So let's read from that note only. In the cross charge mechanism, expenses incurred by the distinct person to carry down on an activity which the benefit of other distinct person is required to be cross charged. Let's say these activity can be professional expenses, auditing की service है. आज यदि आपके गौरव जी आपके पास में एक ऑडिट असाइनमेंट है and your client has multiple branches and the multiple registration in multiple states, in that scenario प्रोफेशनल फीस तो आपने एचओ को बिल रेज करके दिया था, ऑडिटिंग चार्जेस ओनली, बट आपने ऑडिट की होगी अपनी ब्रांचेस की भी. देन द कंपनी हैज टू एनालाइज कि जो आपने सर्विस दी, गौरव भाई ने जो सर्विसेज दी, उस ब्रांच को कितना टाइम उसमें एट्रीब्यूट हुआ. लेट्स से द 30% ऑफ द टोटल वर्क इज डन एट ब्रांच एक्स. Then the 30% of the total bill amount of Gaurav Agarwal would be charged to that branch as a cross charge, but not under the service of auditing, because HO तो audit service दी नहीं ना. Audit service दी किसने? गौरव अग्रवाल ने audit service दी. The HO will charge other professional services at the rate of 18%, and that credit. ये बेसिकली लड़ाई कहां से शुरू हुई सर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं. कॉमन इनपुट फॉर मल्टीपल ब्रांचेस, तो सब स्टेट ने लड़ाई करनी शुरू कर दी. बॉस टैक्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए जिस स्टेट में सर्विसेज कंज्यूम्ड हुई है. बट द इनवॉइस इज रेज्ड टू द एचओ, तो एचओ कैसे उसका बेसिकली वो स्टेट कैसे ले जा सकता है पूरा टैक्स का बेनिफिट. To safeguard the interest of the state liability, basically states, respective states, this thing has come up. These activity can be professional services, maybe the rental services. HR rental में कैसे let's say HO को raise हो रहा है rental invoice पूरा. Then HR operation की services है, हो सकता है centralized पूरे pan India level का HR maintain हो रहा हो. Administrative function of the IT services. IT services means the maintenance of software is done at HO level. इस केस में, therefore, the question here arises that whether the transaction between the two distinct person can be treated as supply as per entry number 2 of the Schedule 1 of CGST Act. If yes, then what shall be the value and what shall be the rate which is going to charge on the supply? So the relevant provision 294, which says the registered person having a unit identity number, doesn't have any unique identity number, registered under section 25, and the section 2 of the 102 subclause 102, services means anything other than goods, money, securities, include activity relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one person, currency or denomination to another, from the currency or the denomination which has a separate consideration is charged. And 16.2 is notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of input tax in respect of any supply of the goods or services or both to him unless he has received the goods and services both. Explanation: this is the existing
sections only, sir. He has received the goods or services or both. Explanation के लिए, for explanation, for the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or services as the case may be. उस registered person के पास में goods or services आई भी हो, where the services are provided by the supplier to any other person to the distinct. This is the on account of the such registered person. Section 25(4) also says where a person has obtained or is required to obtain registration, means registration कहाँ आपको लेना है, then such establishment shall be treated as the establishment of distinct person. Distinct person का concept already existing in the act. Schedule 1 says the activity to be treated as supply even if made without consideration, because they all are the activity जहाँ पे consideration charge नहीं है. क्यों? गौरव अग्रवाल ने जो सर्विस दी, वो सर्विस इन्होंने चार्ज, सर्विस जो उन्होंने सर्विस दी, that service provided to the HO of the auditing service. But इन्होंने सभी ब्रांच की भी ऑडिट करी है, एंड ब्रांच के लिए there is no separate invoice raised. So इस क्वेश्चन को, बिकॉज इस चीज को डील करने के लिए क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको is going to help basically. That cross charge invoice you have to raise to the branch की जिस proportion में आपकी फीस आई हुई है. Let's say if the value is not available, then what? The market value on the same time, at the same point of time, with the same budgets, with the same scope of work. Market value क्या है, उस rate के ऊपर charge होगा. If valuation is not available, because the valuation rules also come and play the great role in the same. The supply of the goods or the services or both between the related person, between the related person or between the distinct person, as specified in section 25, when is made in course of furtherance of business, provided gift of 50,000 of the financial is not included, right? Schedule 3 also says. So let's come to the rule number 28 directly. The rule 28 says value of the goods and services, goods or services or both between distinct person या फिर related person other than through an agent. The value of supply of goods and services both between the distinct person as specified in section 4 and 5 of the section 25, where the supplier and the recipient are related other than where the supplier is made through the agent. So valuation would be what? The open market value of such supply. जिस टाइम आपने ऑडिट करी उस टाइम में सेम ऑडिट का क्या चार्जेस होगा मार्केट में. इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, then the value of the goods or the value of the like kind quantity. Let's say गौरव अग्रवाल उस साइड में उस टाइम में क्या सर्विसेज दे रहा था. लेट्स से गौरव अग्रवाल वेस्ट बंगाल में ऑपरेट नहीं करता, तो वेस्ट बंगाल में जो फर्म उस टाइम में ऑपरेट कर रही है विद द सेम लेवल, उसकी क्या वैल्यूएशन होगी. लाइक एंड काइंड, बेसिकली द सेम लाइक ऑफ सर्विसेज एंड द क्वालिटी. और यदि वैल्यू इज नॉट डिटरमिन्ड एज पर अबव टू क्लॉजेस, then the value will be determined as per the rule number 30 and the 31, provided that जहां पे goods are intended for the supply as such the recipient the value at the option of the supplier, then the amount of equivalent to what 90% of the price charge. Basically this is the existing rule only. So अभी एक इसके ऊपर एक advance ruling आई which is Columbia Asia Hospital Private Limited. I guess most of us are aware of this ruling. It is 27 July 2018 only. The issue is basically इस केस के लिए मैंने आपको पूरा बताना चाह रहा हूँ. इस केस में हुआ क्या था, what are the facts जो यहाँ पे हम लोग को ट्रीट करना, what are the facts of the case. So basically the issue for which the advance ruling is sought is whether the activity performed by an employee at his corporate office or in relation to the employment. Because यदि मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो काम तो मैं करूंगा ही. अब मैं ये तो बोल ही नहीं सकता ना कि हिमांशु मोहता एंड एसोसिएट्स का लेट्स से एम्प्लॉय जो गुड़गांव से सर्विस दे रहा है कि मैं तो हिमांशु मोहता एंड एसोसिएट्स गुड़गांव में काम करता हूँ. नो, ही इज वर्किंग एट हिमांशु मोहता एंड एसोसिएट्स, ही इज नॉट वर्किंग विद हिमांशु मोहता एंड एसोसिएट दिल्ली और गुड़गांव और राजस्थान, राइट. सो बेसिकली व्हाट द आईटी सिस्टम, लेट्स से employment such as accounting, other administrative service or the IT maintenance like my engineering services for the unit located in the other state, that is the distinct person. All single registration is distinct person as per the GST.
Every single registration has separate. So shall be treated as supply wide number entry 2 of schedule 1 of the CGST Act, or shall not be treated as supply as per the entry 1 of the schedule 3 of the CGST Act. Fact of the case kya tha? The applicant is a private limited company engaged in providing the healthcare service, and applicant has its India Management Office, that is the corporate office at Karnataka. Some of the activities, basically what administration activity, HR activity, and IT activity, basically that were carried out at a HO level. So everything was centralized. Generally, every single concept, every single corporate is doing in the same way until unless the numbers are too huge. Like if TCS is there, so separate setups होते हैं. But yes, if it is a company which जिसका एक लिमिटेड लेवल तक है पूरा ऑपरेशंस, तो जनरली एक ही एचओ के अंदर ये सारा मेंटेन करते हैं अपने पेरोल्स, फ्रॉम अकाउंटिंग, फ्रॉम एवरी सिंगल पार्ट, द आईटी सपोर्ट सर्विसेज एंड एनीथिंग. So the applicant की जो basically that the hospital says like the इसकी contention थी that the word employee cannot be restricted to the employee. मतलब basically word तो ये employee तो यार मैं हरियाणा काम नहीं करूंगा, दिल्ली बैठा हुआ काम जहां का भी होगा I will do, because it's a pan India operation we are handling, so he is handling every single services. The word employee cannot restrict to the employment with the registered person as per section 294 of the CGST Act, merely on the account of the location from where he render his employment service. He can't say कि मैं सिर्फ दिल्ली, मैं सिर्फ कर्नाटका का ही काम करूंगा. He can work for anywhere at any level of the services wheresoever it is required. The employment relationship exists between the employee and the employer is a legal entity as a whole and not confined to the location of the registered person from where the said employee renders the service. Basically, therefore, employee renders any service to the registered person is distinct person of the same legal entity. The nature of the activity still assume the character of the service by an employer and the employer. Basically, the employer-employee relationship can't restrict themselves कि मैं इसके बाहर काम नहीं करूंगा if he is employed for X purpose. Accountant will definitely going to do all the accounting work of all the premises. There is no restriction. He can't say no generally in the agreement. And ना मैंने कभी देखा. And allocation, basically there are the two contention. The second contention is allocation of all expenses such as the rent paid, telephone services to other registered unit of IMO is only for the purpose of determining the profit of each cost center. Basically जो allocate कर रहे थे वो अपना सारा खर्चा to determine कि हर एक specific center कितना profit generate कर पा रहा है actual profitability जानने के लिए. So the view which taken by Advanced Ruling Authority is, as per entry number 2 of the schedule 1, IMO is covered under one registration in the state of Karnataka. That is clear. And the unit covered under the different registration, that is distinct units, that is a distinct person. And the unit controlled by IMO, they both are related and distinct person. By implication of any supply of the goods and services from IMO, from HO to the separately registered unit would amount to supply. Means यदि आपने कोई coordination का काम भी उनको दिया है, आपने उनकी IT support service भी दी है from your IMO, from your corporate office to your branches, that will be treated as supply without consideration. तो ये consideration का तो question ही नहीं है. Consideration आता तो बात ही खत्म हो जाती. But there is no consideration, and there is catch also. If there is no consideration, and if you have available, you can also play with, you can do some text planning as well in that. Let's say the HO has the corporate office has input, and the corporate is providing in every management services from the corporate itself. Then that specific branch will raise an invoice to the specific state under cross charge and transfer some input to that specific state if there isn't any liability of taxation.
you can play with that. In time to come, we'll get to know because end में हमने दोनों तीनों चीजों को incorporate भी किया हुआ है. So basically, yeah. So, by implication, and the supply of the services from IMO to the separately registered unit would amount to the supply of services even if made without consideration. Support service, basically this is around business support service. This is only business support services only. Regarding the issue related to the activity performed by the employees at the corporate office in course or in relation to the employment, the employee and the employed in the corporate office are providing some services to the corporate office. Hence, there is an employee-employer relationship only in the IMO. Means कि वो वहाँ पे ही सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे ही आना जाना, every single relationship is with IMO corporate office. Then the relationship is only in the IMO. Means बाकी के अंदर उनका कोई relationship नहीं है. So the chargeability comes basically. This was the view of the advance ruling. इसलिए उन्होंने advance ruling इनके favor में ना देकर opposite दी. The other offices are the distinct person. Therefore, the employee in the IMO in the corporate office have no employee-employee relationship with the other branches. That was something foolish to me. मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया because how is it possible? एक्चुअली अगर एक एम्प्लॉई है अगर किसी कंपनी में तो वो पूरी कंपनी एज अ होल का एम्प्लॉय होगा ना. ये थोड़ी कह सकते हैं. Yeah, that is not that is right. That is not Gaurav Agarwal and company Haryana और Gaurav Delhi, right? Right. मैं ट्रांसफर अगर उसको करता हूँ तो दैट इज माय इंटरनल पार्ट. That is internal part. Whatever work he is performing, that is a duty. He is duty Right. bound to do. Right. अगर मैं ऐसे बड़ी बिग सीए फर्म्स की बात करूं जिनकी ब्रांच अगर गुड़गांव Let's में talk भी about PwC. Let's talk about EY. मैं नाम नहीं ले रहा था का बस. employee EY. So ठीक है मतलब let's be fair. Like you know if an PwC is a firm, so PwC employee never says कि this is I am PwC Haryana. No, PwC is PwC. Yeah, that's it. सर पॉइंट है कि हरियाणा का बंदा यानी दिल्ली में ऑडिट नहीं कर सकता. And now the time is also come where we are working from home. Right. So he must be taking care of work from all over the world even, right? Not restricted to the specific state or country. But anyways, being a chartered accountant, we are restricted to our opinion because we can't give opinion. We have to read the law, whatever the law. इसमें तो बड़ा वो डिस्प्यूट अराइज होगा और अभी हमने रिसेंटली देखे भी हैं इवन कि एआर जो है वो मेजरली रेवेन्यू के फेवर में जजमेंट दे रही है, चाहे वो लॉजिकल हो या ना हो, लॉ के इंटेंशन बेस्ड हो या ना हो. सर डिपेंड करता है हाउ वी आई गेस पुट अक्रॉस आवर मैटर. कुछ चीजें पेयर्स में भी आई है यदि आप देखेंगे तो. सो बट ठीक है, दैट वाज सम डिसीजन व्हिच इज नॉट डाइजेस्टिव टू मी. हो सकता है मुकेश भाई को ठीक लगा ये डिसीजन, बट एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है बिकॉज employee is an employee. Employee is not restricted to any specific branch. So basically any specific unit, right? So anyway, sir, but the third point which AR took is the activity made between the related and the distinct person are treated as supplies. Further, the valuation shall be done as per section 15. इन्होंने सीधा valuation बोलते हैं उस तरीके से होगा. And valuation shall include what? All the costs, basically the cost to the employee need to be taken into consideration at the time of the valuation of the service. And उसके according उन्होंने एक billing करी to as treated as separate entities, service by the one entity to another entity as a with no relationship. So they have raised and the cross charge definitely वहाँ पे cross charge भी इसमें तो अपील बनती है, बिल्कुल बनती है. नहीं अपील बनती है सर, they already moved for the appeal as well. क्योंकि अगर वो ऐसे बिलिंग करेंगे तो सर हर एक छोटी चीज के लिए सर हर एक छोटी चीज, और मेरे को लगता है कि every single office is liable. Every single office is liable because anybody whosoever has more than 2 or 3 registration in different states, then he is liable for that. सर Are you getting my point, sir? एक मेल भी डाल दी ना तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपका वो डीम्ड डिस्टिंक्ट वो सप्लाई ट्रीट करेंगे उसको कि आपने ये मेल डाली है. अगर मैं लिटरल इनके उस पे सेंस में जाऊं कि वो आप दूसरी ब्रांच का कुछ भी नहीं कर सकते. सर बट ये बेसिकली आर है ना, द बेस्ट पार्ट इज आर रूलिंग्स का, रूलिंग अथॉरिटीज का ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ कोलंबिया के ऊपर. सो सर रेवेन्यू को तो बेस मिल गया ना. रेवेन्यू को बेस मिल गया, यस डेफिनेटली रेवेन्यू को बेस मिल गया. बट एनीवे सर लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज माय आर अंडरस्टैंडिंग एज पर क्रॉस चार्ज.
basically the facilitation and support service, anything which doesn't qualify to goods or services, when an auditor contract with the head office for audit service, ये अपने 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 वाला example है, the service are implicitly rendered to the branch having offices for the different GSTN. आज हम audit कर रहे हैं and आज हमारे clients के let's say multiple registration है, तो audit तो हम single registration HO के नाम पे billing करते हैं पूरा. And when an employee working at the head office rendered the services to the branch, basically he rendered the services to the branch as well, though there is no non-taxability in that case, but even the benefit of the services is enjoyed by the branch as well, because definitely audit branch की भी हो रही है, जिसका let's say 100 turnover is the total turnover of the company is the 100. There are 3 branches. In the same way, the Jabalpur, if I talk about 50, 30, 20, so definitely audit service enjoy कर रही है, branch भी internal audit का यदि let's say system placed है, तो internal audit उस branch की भी हो रही है, HO की भी हो रही है, and respective तीनों rest of the branches जिसमें turnover नहीं है, सिर्फ losses है, वहाँ पे भी हो रही है, because revenue leakage के ऊपर सब लोग control लगाना चाहते हैं. So उस case के अंदर yeah, so basically yeah, even the benefit of the services is enjoyed by all the branch and no commercial contract at the level of branch. Basically there is no level, because the contract जो auditing का होता है with the HO only, with the corporate office only. हम generally जो bill raise करते हैं HO को ही करते हैं. So basically यदि मैं बात करूं employee employer relationship के ऊपर, my understanding is the word employee cannot restricted to employment with the registered person. सिर्फ उस registered person से नहीं हो सकता बॉस, PWC इंडिया से ही होगा, ना कि PWC हरियाणा या दिल्ली से होगा. सर बहुत से केसेस में ये भी होता है कि अब उनका हेड ऑफिस हरियाणा में है, सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे होते हैं, लेकिन उसमें कभी भी ऑफिस का मेंशन नहीं होता, या ब्रांच ऑफिस हरियाणा में जहाँ पे मेरे because see all the big 4 people, all the big firms people, they keep moving on their branches. Let's say if there is a requirement at West Bengal office, they may go. There is requirement in Bengaluru office, then they may go. So but anyway sir, because if I am talking right now, I am talking about in keeping the AR of the Columbia Hospital only, right? So merely on the account of the location for where he rendered the employment service, the employment relationship exists between the employee and employer, that is the legal entity as a whole, not with the location. Simple. That is not restricted and confined with the location. Simple. So when an employee render any services to other registered or person of same legal entity, nature of activity still assumes character of service by employee or the employer in the course or in relation of his employment, as he is an employee and the legal entity of as a whole, not only for the register, not only for the registered premises or not registered person of that specific state or the specific unit. In common parlance, the right from starting an individual join a company as an employee, तो वो कंपनी एज अ होल उसे यूज करती है, ना कि उस स्पेसिफिक यूनिट वाइज, नॉट जीएसटी एंड बेसिस वाइज. जीएसटी तो ना कि यूनिट वाइज, मतलब बेस्ड यूनिट जा रही, पैन तो कॉमन है, एंटिटी इज नॉट सेपरेट. So like in the same way, any dispute at the time of the leaving of the entity at the company level, not at GST level. Let's say हरियाणा वाले ने fraud किया, तो वो company level, company का jurisdiction होगा, वहां पे court में case होगा, ना कि on the respective jurisdictional level. Even in the commercial sense of the term, employee-employee relationship is the legal entity level, not at the micro level. Very simple. GST law doesn't confine employee word where employer and employee. As per the law, Lexion Dictionary, employees. So this is an extract of some dictionary, जहाँ पे employee को definition दिया that employee refers to one who is employed by another, especially a business concern. Employer refers to one who employs. Very simple. Employer कौन? जो किसी को नौकरी लगाता है, and employee वो जो किसी के पास में employee होता है. Hence, the service rendered by the employee towards the accounting, administration, IT
pertaining to other unit remain the character of the service by an employee in course or in relation to his employment, hence not to be treated as supply of goods or service as per entry 1 of schedule 3, because this is an exempted service. This is in schedule 3, not in the entry which AR is treated, not in the schedule 1, right? So therefore the GST not applicable on the said activity as the same is not supply of service. So यदि अब मैं बात करूं कि there are few other services where services by HO to the branches, क्योंकि distinct person हो गया, every single unit is a distinct person. तो गौरव जी इसके अंदर expenses of the professional service, travel expense consultancy, communication expenses incurred by HO for which the benefit is derived by the branches being distinct person shall qualify as a supply even if there is no consideration by virtue of schedule 1 of para 1. As far as if definitely यदि valuation की concern हुई, if I talk about the valuation rule, then it is permitted that note that the second provision of rule 28 of the CGST Act 17 provide that where the recipient is eligible for full tax credit and the value declared in the invoice shall be what deemed to be the open market value. Supply need not to require any markup, any cost. Basically उसके अंदर there is no need to, so whatsoever, let's say लाख रुपए का invoice एक बिल आया GST audit का और 30% मोटा जो आपका total service था वो consumed हुआ for X branch, then there is no need to make any markup. Just because यहाँ पे आपके पास एक value का criteria fix है, you just pass on that benefit, you just raise an invoice of cross charge to the respective branch, not as auditing service, as other professional services. However, where the ITC, इस केस में सर एक चीज थोड़ा सा बड़ा nuancely आपको समझना पड़ेगा. This is the nuance of this, the integrity of this, section is where the ITC is not eligible to the person. Let's say restro services है, molecule, let's say Haldiram की जो services हो गई, because Haldiram has many outlets. In that case, Haldiram को ITC नहीं मिलता. There is no ITC eligible. The same should be at the open market value. इस केस में आपको जो valuation उठाना पड़ेगा, that would be open market value, या फिर the value of the supply of the like same quantity, same kind की services जो उस moment में दे रहा है, वो valuation हमको pick करनी होगी. Further, the head office raise a tax invoice on its branch in respect of the service given to such branch. It is taxable to offset its output tax credit on the service which cross charge against the output liability arising on account of cross charge. Basically, the same essentially goes with intent of the GST load in providing the state wise input tax credit. जो मैंने आपको बोला था, because state चाहता था कि यार मेरे को, because GST is again a tax based consumption based taxation point है यहाँ पे, तो basically जिस state में consume हुआ तो that state raised the voice कि मेरे यहाँ पे ऑडिट हुई है तो मेरे को उसका टैक्सेशन क्यों नहीं मिला. आपकी एचओ देयर इज नो राइट ऑफ एचओ कि सारा क्रेडिट वो लेकर चला जाए, सारा टैक्स का इनकम वो लेकर चला जाए, राइट? बिकॉज पैन इंडिया लेवल पे इफ ओनली वन जीएसटी नंबर देन सिनेरियो डिफरेंट होता, बट इट इज स्टेट वाइज नंबर, सो वी हैव टू bifurcate our process in a way. And sir, this is my only my point here. The relevant HSN as per the everything in the case of cross charge would be 9983, which is other professional technical and business services. Means आज हमने कुछ ऐसी सर्विसेज रेज करी है, सर्विसेज कंज्यूम करी है जिसका हमको क्रॉस चार्ज रेज करना है, इनवॉइस रेज करना है, तो जो एचएसएन में उस क्रॉस चार्ज के इनवॉइस पे लगाऊंगा, मैं ऑडिटिंग की नहीं लगा सकता, बिकॉज एचओ का प्रिंसिपल बिजनेस इज नॉट ऑडिटिंग. एचओ का द प्रिंसिपल बिजनेस इज नॉट ऑडिटिंग. दैट इज ओनली बिकॉज इन केस ऑफ क्रॉस चार्ज ही हैज टू जस्ट pass on that pass on the invoice as per 9983, and the GST rate is 18% irrespective of the nature of the services taken from the original vendor, right?
So this is very important, sir. These are the three points which I really want. Uh, there is a tool of tax planning as well. आप इसके अंदर क्रॉस चार्ज में भी कुछ टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, या यू कैन प्ले विद टैक्सेस. हाउ? So let's say, sir, services for which the ITC is eligible in the hand of HO would make the same, the ITC basically HO को it is ineligible, but would make the same eligible in the hand of branch. ब्रांच ऑफिस कैसे? लेट्स से हेड ऑफिस ने ये सब, अभी ये केस आई गेस सभी कंपनीज में आएगा जहां पे मल्टीपल ब्रांचेज है. क्यों? लेट्स से इफ एचओ, इफ द सर्विसेज, अभी सभी कंपनीज ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अपने एम्प्लॉइज का बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, एंड द इंश्योरेंस इज नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट as per virtue of section 75 restricted input. In that case, head office take a group insurance which is an eligible services, but covers the working of what? All the employees whosoever is located in pan India. यदि आपने ग्रुप इंश्योरेंस लिया, मैंने भी इंश्योरेंस लिया, तो मैंने उसमें सारे एम्प्लॉइज का नाम लिखवाया, क्योंकि ब्रांच वाइज में वो नहीं मिलेगा, centralized base पे. And that distinct establishment as well, it means there are few employees who are performing their duties at the distinct unit, means not at the unit of HO level, once cross charged to branch. So basically cross charge हुआ, the same would take the character of other business services for which ITC is eligible to recipient. Means HO will raise invoice as what? Cross charge under section 99 under HSN of 9983. And the service tax would be what? GST on the same would be what? 18%. And then 18% is eligible to the recipient of that unit, distinct person, because the HSN which the HO will use would be 9983, other professional services. But yes, at the level of HO, it is not eligible. The same would be cost. But yes, basically the tax which they have passed on is to the branch would be eligible for ITC. उसके ऊपर तो ITC आपको मिलेगा. यहाँ पे वो restricted है, but वहाँ तो restricted नहीं है other professional services में. Right, sir? It is also, so it is pretended to note that HO cannot bill under the issuance of insurance services because neither he is IRDA registered. The specific licenses which is required for issuing an invoice under IRDA is also not there with them. So आप insurance services का invoice नहीं दे सकते. Invoice आप दे सकते हो. That same invoice you will raise to what? You will raise to that specific branch under 9983, which is the other professional services, not as per insurance services. Even the commercially in the view, the same is not permitted because commercial आप देखा जाए आप कर भी नहीं सकते because there is no IRDA registration as well. So there is one more tax planning tool, sir, which is again very interesting. Let's say various legal entity are registered at one place, right? एक ही ऑफिस के अंदर हमने बहुत सारी एंटिटीज कई बार रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, करवा भी रखा होगा अपने अपने क्लाइंट्स का. एक ही प्रमाइसेस में देयर 4-5 कंपनीज रजिस्टर्ड. एग्जांपल के लिए यदि हम समझें, A Limited and B Limited are related since the controlled by C Limited. A Limited is the owner of the premises for which the electricity energy expenses. Electricity के ऊपर there is no GST because it is taxed at nil rated. Are in the name of A Limited. Basically, A Limited premises का owner है और A Limited के नाम से बिल आ रहा है. This need to be charged to B Limited because कैसे हो सकता है उस कॉमन ऑफिस के अंदर A Limited कुछ यूज कर रहा हो इलेक्ट्रिसिटी, B Limited भी कुछ यूज कर रहा हो. अब कैसे मेजर करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते स्विच इतना यूज वो कर रहा है. The easy way is
the partition or the floor distribution. Let's say 100 square feet office area, 50 is used by him, 50 is used by him, then 50%, right? This amount needs to be charged to B Limited on the basis of area shared by B Limited. And once cross charge to B, जैसे एक बार हमने cross charge किया to B Limited, the same will be the character of other business services. And जैसे ही other business services आ गया गौरव जी, the ITC is eligible to the recipient. Though on the supply, on the preliminary supply of electricity, there is no GST. क्योंकि GST इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो GST नहीं है, बट जो इन्होंने क्रॉस चार्ज का इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, जो क्रॉस चार्ज यहाँ पे हुआ, उसके ऊपर ITC दे हैव टू चार्ज, एंड बी लिमिटेड को उसका ITC भी मिल जाएगा. The hence the tax planning is, let's say there is input in A Limited, which That is can not be transferred. utilized, and you can pass on in that way to the B Limited. Other business auxiliary services जो सर्विस टैक्स में होता था, आपको याद हो तो, in the same way other business and related services. So it is intended to note that AO, अब एक चीज बड़ी ध्यान से देखिए सर, AO इलेक्ट्रिसिटी का इनवॉइस नहीं रेज कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उसके पास लाइसेंस नहीं है, राइट? ना ही वो उस सर्विस के अंदर रजिस्टर्ड है गुड्स और अंडर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन. Not on transmission, because neither certified by the electricity board. There is no license of electricity board. I can't raise invoice of neither reimbursement. The invoice will be charged as cross charge, would be taxed at 18%, and that 18% will be eligible to be limited. Transfer of input. So the service is legally, and eventually in the commercial of our view, the same is not permitted. So this is my view. There might be chance like Gaurav bhai, आपका कुछ और view, but this is what my view is, because this is an other services. मेरा preliminary work is not supply of electricity. My preliminary work is what, so मेरे को उसको other services में treat करना पड़ेगा, and I pass on the credit to the same. अब एक there is last thing is what, once the let's say HO ने purchase कर लिया आपकी एक heavy capital goods, and ITC उसका accumulate हो गया, and सबसे इजी वे क्या है सर, आपकी ब्रांच मान के चलिए HO में इनपुट है, और आपकी ब्रांचेस में टैक्सेबल लाइबिलिटीज आती है, जो पॉसिबल है, बहुत सारी कंपनीज में होता भी ऐसे. उस केस में और इसके अंदर स्पेसिफिकली लेट्स से आपने कोई कैपिटल मशीनरीज ले ली, क्लीनिंग सर्विसेज यदि आप यूज कर रहे हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप मशीनरीज लेकर आ गए, मशीनरीज कॉस्ट टू यू लाइक बॉम्ब, एंड उसके ऊपर जो GST एक्यूमुलेट हो गया, मींस GST एक्यूमुलेट इज ब्लॉक्ड योर कैपिटल. You can raise an invoice to your branch, and that branch will get the credit of the same and will be offset against his liability. Oh, that against the liability of that specific distinct person, means specific branch. So मतलब basically from your pocket, one pocket to another pocket, to you are shifting your input in a packet of what, cross charge, so that you are managing your funds, fund flow, cash flow. So these are the few tools which I was thinking here, let me share with this with everybody. So by this I'll say thanks to everyone for being very patient listener. Thanks to all the patient listener. And any questions now if we have on that cross charge, e-bill, ISD, I love to take it, sir. सर आपका डेलिब्रेशन बहुत एलैबोरेटेड था, तो आई गेस क्वेरीज ज्यादा आई नहीं. होपफुली सबके क्वेश्चन आंसर हो गए. एक दो क्वेरीज मेरे पास फोन पे आई हैं पर्सनली. एक क्वेरी यही है सर, अगर हम सैंपल्स देते हैं तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि सैंपल्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो उस केस में ई-वे बिल जनरेट होगा या नहीं होगा? तो सैंपल्स में इफ द सैंपल कॉस्ट इज बेसिकली सैंपल का जो हम लोग जनरली बिलिंग करते हैं ना, सर वो 100 रुपीज के लिए ही करते हैं. और यदि आप या 1 रुपी 100 रुपी, मतलब जो भी नॉमिनल, इट इज वेरी नॉमिनल अमाउंट यदि आप देखेंगे तो इन दैट केस यदि अमाउंट और इफ आई गो टू द वैल्यूएशन रूल, and the basically valuation is for let's say for more than 50,000,
then only EVA bill required, otherwise there is no EVA bill required. और there are few conditional sale, means माल भेज दो, पसंद आएगा तो रखेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। यदि आप देखेंगे उस केस में भी EVA बिल बनेगा। यदि माल रह गया तो ठीक है, नहीं रहा तो जब क्रेडिट नोट वापस बनाओगे उसको पिकअप का, तो आपको एक EVA बिल बनाना होगा। ठीक है सर, एक मितेश जी का क्वेश्चन आया है, whether medical insurance to be claimed in ISG or through cross charge route। सर देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपको मैं यही बोल देता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस जनरली कॉर्पोरेट ऑफिस पे दिस इज एक्शन which is taken by the higher authority, management level. So generally always built to HO only. So ITC to the HO is not eligible. That is very clear. आप सेक्शन 17(5) में जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करके वहां पढ़ोगे तो उसका ITC तो आपको नहीं मिलना। बट व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से आपने 100 एम्प्लॉइज का एक इंश्योरेंस लिया आपके किसी क्लाइंट ने, और आपका जो HO है वहां पे लेट्स से 40 एम्प्लॉइज बैठते हैं, रेस्ट ऑफ द 6 एम्प्लॉइज आर सिटिंग इन सेपरेट स्टेट, इन डिफरेंट स्टेट। इफ इट इज द सेम स्टेट नहीं मिलेगा, सेपरेट स्टेट। देन द ऑन द हेड काउंट, कितने नंबर ऑफ बंदे किस किस स्टेट में है, उसके हिसाब से यू हैव ऑलरेडी द पॉलिसी अमाउंट पर पर्सन कितना चार्ज हुआ है, उसके हिसाब से आप बिल कर दो, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं लगा सकते आप कुछ भी। So whatever consideration you will, generally what happens, accounting service, IT support service में whatever consideration you charge will be treated as actual consideration. कोई दिक्कत ही नहीं है, no question at all. But let's say if the same is, you have the value, you have some basis, then you can't take any figure in air. So you have to charge head counts, other professional service 9983, and just pass on as a cross charge to the respective branch. सर इसमें एक उनका क्वेश्चन है मितेश जी का, ये है कि हम क्या ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से ये मैंडेटरी था, तो ये ITC अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नहीं सर, कोविड के वजह से मैंडेटरी था, खाना भी बहुत मैंडेटरी था कोविड की वजह से स्टोर करना, और हमने अपने एम्प्लॉइज को दिया भी। आपने कुछ फैक्ट्रीज में सुना हो, आपके क्लाइंट से भी बात करी हो, उन्होंने फूड भी सप्लाई किया है। अब सर फूड का तो मिलता नहीं है ना, मैंडेटरी तो था बट वो फूड का मिलता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? तो पॉसिबल ही नहीं है उसका मिलना, बिकॉज दैट इज, सी बाय लॉ इट इज रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय मी और नाइदर गौरव भाई, नाइदर हिमांशु मोहता, नाइदर मुकेश भाई। सो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय डिपार्टमेंट। सेक्स सर लड़ाई थोड़ी करनी है 17(5) के लिए। वी कांट गो इनटू, हाँ, इफ यू वांटेड टू टेक, यू कैन टेक ऑन योर रिस्क। यदि आपको लगता है आपके पास में कुछ बहुत ही एक तरीके, मतलब यू नो यू हैव सम गुड प्रूफ कि हाँ यार हम इसको लेना चाहेंगे, और आपको लगता है कि यस यू कैन यू नो लिटिगेट द मैटर और यू कैन वन द मैटर, देन यू कैन डू। अदरवाइज आप, मेरे को अभी भी याद आता है अभिषेक राजा जी, जिनका Day 1 पे सेशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि टेक हेल्प फ्रॉम लॉयर्स, द गाय हु इज होल्डिंग ब्लैक कोट। तो मेरे को लगता है आपको फिर आप उनकी हेल्प लीजिए, फाइल एन रिट पिटिशन। सो इफ सेम इज एडमिसिबल देन ग्रेट, इफ नॉट देन तो नॉट तो दिख ही रहा है सर, नॉट तो है ही डेफिनेटली, एज पर लॉ इट इज नॉट लीगल। Okay sir. So provided that the input tax credit in respect of the goods and the services or both shall be available, with it is where it is obligatory for an employer to provide the employee the law. तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सर बेसिकली मैं इनका पॉइंट बताता हूँ। इनका पॉइंट ये है कि बीच में I missed the above, you know, about things. सर मैं मितेश जी का पॉइंट बताता हूँ। उनका पॉइंट ये है कि बीच में मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई थी कि सारी कॉर्पोरेट्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है अपने एम्प्लॉयज के लिए। वो गाइडलाइंस 14 दिन बाद उन्होंने विड्रॉ कर ली थी कि, तो वो उसमें कुछ दिन का गैप था। तो उस बीच में अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ली है बिकॉज कि वो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी था, तो एक क्लॉज है कि अगर हम एम्प्लॉय के लिए कुछ करते हैं बिकॉज कि वो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, क्या उस क्लॉज में हमें ITC मिल जाएगा? सर आपका म्यूट हो गया। सर सॉरी, प्लीज गौरव जी, सॉरी एक कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट था, सो जस्ट आई हैव टू पिक। सो हाँ सर, वो जो टाइम डिफरेंस की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बात है। बेसिकली सर देखिए, इफ आई टॉक अबाउट माय व्यू, सो माय व्यू इज वेरी मच क्लियर, लाइक यू नो हम लोग को नहीं मिल सकता इनपुट,
but yes, because मेरे को लगता है because ये आज एक normal companies level पे देखे ना सर 10 एम्प्लॉय 15 एम्प्लॉय वहां पे this amount doesn't matter. But if let's say if we are talking about the companies who has 10,000 employees, Like and the policy amount is let's say 2,000 rupees per person, yeah, 1,000 rupees one person, right? The same would be 1 crore, and 18 lakh would be the GST. In that case, definitely people will fight, and people will go for it. For the they are going to get the take that credit, and definitely on the later on stage, if the litigation comes, and because due to the COVID and all this pandemic situation, there might be chance like some something will go in the favor of assessee. But as of now, जो मैंने अपना study कर रखा है, my view says this is 17.5 restricted it. उनका थैंक यू आ गया, तो आई गेस उनको आंसर मिल गया है। तो Thank सर आप बहुत डिटेल था, थैंक यू वेरी मच। अब मैं तो मुकेश जी सुधीर जी को बोलें कैसे करें? हाँ सुधीर जी को हैंड ओवर देता हूँ कि सर वो फाइनल वोट ऑफ थैंक्स करें आपको। brief of the program. Yes. Thanks Himanshu ji. Sir, Thank you, एक बात था thanks. from very beginning to your last word of the speech, the energy level जो सर आपका था ना सर हिमांशु जी वो सेम, मतलब कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब आपका पिच जो हो या कहीं टोन जो हो आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी लो हुआ हो, and the Thanks, way sir. Thank you you very have much. explained the things relating to the e-way bill, ISD, cross chart, it was fabulous, and it was self-explanatory and understandable to each. Thanks once again. Or now I request. Sir, thank you, Sudhir ji. Thank you very much for giving. You heard me very patiently, and I am really obliged. You guys were awesome audience. The numbers are not much, but I am sure over a period of time we'll get some views as well on the Facebook or the YouTube. And the effort which GCP has put in is altogether awesome. I don't have words because the way we people have because हम लोगों ने starting से बोला था because these are the session which is done in house, right? And one fine day, and I am really thankful to Mukesh bhai. One fine day he just called me up, आपके पास मैं ये 3 टॉपिक दे दूं, आप बोल देंगे? तो मैं सोचा सर ठीक है सर, बोल देंगे, we'll see कुछ ना कुछ. Though we do some study, and definitely for the cross charge, I thank my friend Shivashish who helped me to understand this topic more minutely, so that because I was thinking like because I am so sure Mukesh is just taking few more time, right? A bit more time, because this cross charge is one of the things which will definitely screw up everybody, right? तो उसको समझने के लिए I really want to keep it so wisely in front of everybody, because we have to understand it, and because it is a law and it is an opportunity. Every law in India give an opportunity, and I believe this is an opportunity to plan your taxes. ये जो 3 चीजें थी सर, this is a because under the head of within law is a tax planning. मैंने विनोद वीजी सर से क्लास ली थी तो उन्होंने यही बात बोली थी, anything which is as per law is a tax planning. If you are prohibiting law, it is not tax planning, it is bad tax planning. So मेरे को लगता है this is giving an opportunity to plan your basically to your client's business. And I'm telling you, once I have done it, मैंने ये किया, give me the kind of confidence which client has shown is altogether different now. So I request and urge whosoever is having a client who has multiple branches in different distinct states, please use that cross charge section wisely. I am sure lot of opportunity will come to plan the cash flow, because GST ITC is what? Accumulated ITC is blockage of working capital, which will give us an opportunity to use our funds flow in a perfectly well position, in a perfectly well way. That's it. Sir, over to you. Sorry, I take it again, but because sir मैंने इसको पढ़ा कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, उसके बाद से ही it's really close to my heart. So अभी I am still finding out कि हम इसको कैसे और इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसको benefit ले सकते हैं out of it. That's it, sir. Anyway, sir,
thank you very much for listening me. Thank you very much, Gaurav Bhai. You are amazing moderator. The way you keep asking the questions, the way you, I have seen it. You were too attentive, and I am sure rest of the guys were also attentive. So the video was off, but yes, thank you very much for the great Thank you. session today, guys. Thank हमारे आदित्य मिश्रा जी भी हैं, वो भी काफी जबरदस्त मॉडरेटर रहे हैं हमारे साथ. Oh, Aditya, sir, Aditya ji, thank you very much. हेलो हिमांशु जी, बहुत अच्छा रहा thank you. सेशन आज का. और इतना डिटेल सेशन जो अभी तक जो चौथा दिन हमारा चल रहा था, तो उसमें सबसे लंबा सेशन ये रहा. और इतना डिटेल और इंटरैक्टिव आपने इतना एनर्जी के साथ इसको बताया हमें, ये बहुत ही मार्वलस था सर. और इट्स आवर फॉर्चुनेट टू हैव यू एज ए मैनेजिंग बॉडी मेंबर ऑफ जीसीपी. अरे सर. तो और आपका जो सक्रियता है हमारे साथ, वो हमें और एनर्जी भरता रहता है. और अभी आज रात में भी आपको थोड़ी सी ड्यूटी, वो जो हमारे जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ सेमिनार होने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा टाइम. तो बहुत बहुत धन्यवाद. लगाना नहीं पड़ेगा, although we have already arranged few speakers. हाँ, so I am sure that मैं उसको आज क्लोज करना चाह रहा हूँ. आज क्लोज कर देंगे सर, नो वरीज. So because both all the speakers are my friend only, so they have no right to say no to me. तो जो डियर पार्टिसिपेंट और भी जो सुन रहे हैं, वो 13 जुलाई से हमारा एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स और डाइटिशियंस और ड्रेसिंग एटिकेट्स ये सब सिखाएंगे हमें. तो आप लोग तैयार रहिएगा. 6 दिन का वो प्रोग्राम होगा, तो आप लोग को भी उसमें ज्वाइन करना है. बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है. यस. और just want to add few words yes, to Mukesh ji's thing only. Guys, this is the topic. See, आज हम लोग बहुत वेबिनार कर रहे हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, right? Now everybody is like sick of this पढ़ाई and webinar thing. कोई webinar बोलता है यार बहुत हो गए सर, बहुत हो गए. So the point is, the new thing which we really want to bring is what we want to bring people who can improve our lifestyle. So we are trying to bring people from the industry who are like, if I give you an example, the dietitian. What is the proper diet? Most of the chartered accountants having a tummy, small baby, right? Because all the time we are sitting on a table, on a chair, on a chair only. So how to control your diet in a way so that you look smarter? If I talk about look smarter, how you dress yourself? आप क्या पहने जिससे आप अपने क्लाइंट को फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसको फर्स्ट लुक में इंप्रेस कर पाए. बाय वन ऑफ द फ्रेंड नेहा रखेजा. Again, if let's say, because the way Gaurav Bhai was sitting there was continuously like this, so there might be chance कि इनको बैक एक हो, neck एक हो, या headache हो. Not headache, but yes, rest of the ache, wheresoever the joints are there. So we are bringing a physiotherapist who guide us what are the kind of exercise which you do on a proper gap. So this is going to be a great interactive session, and this is going to change our lifestyle and definitely help to run very fast in this pandemic time, because this time is actually a bit low to cope up the time and everything. I guess we have to run very fast to cope up with the situation of the pandemic. So that is the only motto. Rest we will definitely bring more. The list will be ready by a day or two. And I am looking forward for these amazing series to come. And इसी के साथ सर अब मैं क्या करूं, because अभी तक मैं बोल रहा था as Himanshu Mohta of the speaker of today. Now I am speaking Himanshu Mohta as a GCP member of today, right? So this appeal for the viewer today to bring more and more people on the board to understand what are the nuance of the things, what are the nuance of the nutritions which we require to fulfill our balance of diet plus our, and the dietitian, and we have invited one more dietitian, sir. She will guide us what to eat, what not to eat. If you are
empty, your stomach is empty for more than 4 hours, what are the small thing which you can have so that, because खाली पेट भी मोटापा बढ़ाता है, मेरे को नहीं पता था। जब मैंने अपना डाइटिशियन कोर्स किया during my time, then only I got to know. But point is, sir, I am look forward. I don't know about you. I am look forward for it. And sir, see you soon. And tomorrow we have again one session. And now over to the team, managing team. Thank you very much, guys. Thanks. Okay, sir. Thank you. Thank you, Gaurav Agrawal ji, for your wonderful moderation of the program. इतना आप लोग जितने भी मॉडरेटर्स आए हैं, मैं इतना ओवरवेलमिंग हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के कि एकदम से जान सा ला दिया है आप लोगों ने प्रोग्राम में, और एकदम लाइव हो जाता है चीज़ें। और आपने भी, आदित्य मिश्रा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ इतना एंजॉय किया, और आप लोग ऐसे लोग मुझे मिले जीवन में कि जो बहुत वैल्यू एडिशन कर गए मेरी लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर, इस वंडरफुल प्रोग्राम के लिए। और जो भी मेरे अटेंडीज हैं, आज के पार्टिसिपेंट, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार, कुछ पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे हैं जो लगातार हमें आज चौथे दिन भी ज्वाइन करके सुन रहे हैं। तो इस पूरे कोर्स को वो पूरा करेंगे। तो कल के जो वेबिनार हैं, जो कोर्स का जो 5वां दिन है, उसके लिए आप लोगों को फिर से आमंत्रित करते हुए आज का जो ये सेशन है, हम यही फॉर्मली इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गौरव जी, आप होस्ट हैं, आप सेशन को एंड कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हिमांशु जी, हम लोग बात करेंगे एक बार इस चीज़ को लेके अभी। जी सर, जी जरूर सर। यस।